Huh. You guys can see my screen, right? Yes. Yes. Okay, so anyone who would like to, आप लोगों ने अगर खुद भी कुछ एनालिसिस करी, anyone wants to say anything, what they expect going ahead? What is your expectation? Why? Anyone? Any idea? No one? Yeah, when you guys come to class, do something of your own. Then only you will understand better. चलो लेट्स स्टार्ट। सो देखो यूएस ने तो काफी बड़ा फॉल दिया है in this past week, and the close was also very bad, almost near to the lows of the week. Okay. Now, if you see US market, okay, it looks really, really weak. Now, at this point of time, how many of you think that we should go short next week, or should we look for again a rebound? Because ये देखो ये सब falls आए थे weekly पे, but उसके बाद ऊपर गया. So how many of you feel कि we should go short? How many of you feel that we should be long? Now is the opportunity to buy. How many of you feel that, or how many feel कि now a new downtrend has started? Anyone? Any of you? How will you decide? So 4400 could be a demand zone, and we look for a reversal there. Buy on dips, still we're on buy on dips. Okay. Good. Anyone else? आशुतोष, जहाँ तक आई अंडरस्टैंड, Mhm. डॉलर इंडेक्स तो बुलिश है, सो स्टॉक्स थोड़ा तो नीचे जाएंगे. प्लस आई थिंक यूएस में न्यूज़ खराब है डेल्टा वेरिएंट लेके. अभी पता नहीं, जहाँ तक मैंने न्यूज़ पढ़ा है वहाँ पे तो सीरियस हो रहा है. सो Mhm. पता नहीं, मैंने कहीं एक और जगह पढ़ा था कि फेड वाले शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे. तो इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होता है? फेड अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, पैसा हाउ डज इट पैसा इम्पैक्ट? आना बंद हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा स्टॉक मार्केट्स में, बिकॉज नाउ दे कैन बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट. So is it तो beneficial कंपनी for then that is so beneficial for emerging markets, right? ओके अगर में पैसा जाएगा, यूएस पैसा में तो नहीं अभी. जाएगा तो फिर इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा. हाँ, मुझे लग रहा था कि शायद बॉन्ड्स में पैसा जाएगा कम. फिर सबसे पहले टेक्निकली देखते हैं, टेक्निकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, दिस इज वन ट्रेंड लाइन. एक ट्रेंड लाइन ये है हमारी. देखो ये ट्रेंड लाइन कब की ब्रेक हो चुकी है. Now we are at this the second trend line. Whenever the second trend line breaks, that means that shows that the trend has reversed or it has become a sideways. Okay. पहली ट्रेंड लाइन ब्रेक जब होती है, then we need to always wait for the second one. Reason comes from Elliott wave analysis. Always, if you will see Elliott wave में क्या होता है आपका कि first wave, second wave, third wave is very steep, and then comes the fifth wave, which is like this. So that's why होता क्या है कि if you draw a trend line,
ये आपका एक ट्रेंड लाइन बन जाता है थर्ड वेव का, जो कि बहुत स्टीप होता है। एंड जब ये ब्रेक होता है तो एक जो फाइनल आपका लेग होता है वो हो जाता है आपके फिफ्थ वेव का ट्रेंड लाइन। ठीक है, एंड दैट्स वाई यहाँ से ये रीजनिंग आती है कि जब सेकंड ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, दैट काइंड ऑफ tells you that this move, whole five wave move has ended and it might be the time for reversal. ओके, तो ये यहाँ से थ्योरी आती है ट्रेंड लाइन में। अब देखो यूएस के केस में क्या है, लाइक प्रत्युष वो सेइंग इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड ऑल, देखो वो बढ़ा है नहीं, दैट इज जस्ट न्यूज। ओके, एंड नेवर एवर यू शुड ट्रेड ऑन न्यूज। जो चीज हो गई है उस पर ट्रेड करना होता है, क्या न्यूज है एंड ऑल उस पर दिमाग नहीं लगाना है। न्यूज एंड ऑल ऐसे ही फैलाई जाती है जस्ट फॉर पीपल टू थिंक। So now in case of US market is sitting at its trend line, unless and until we see a close below this trend line, okay, unless and until we see a close below this trend line, it's still bullish. Okay, so I will be looking to buy unless and until I see it closing below this trend line. Okay, so for me, still my view is upward. It's not at all to sell. Okay, I'm still bullish. जिस दिन फेड बढ़ा देगा रेट, कंफर्म हो जाएगा, उस दिन सोचेंगे। बट एज ऑफ नाउ, उससे पहले ऑब्वियसली अगर वो होना होगा तो ऑब्वियसली उसके पहले ही हमें चार्ट्स पे प्राइस में दिख जाएगा, प्राइस वुड स्टार्ट क्लोजिंग बिलो दिस। ओके, सो अगर वो होना होगा तो पहले ही खुद हो जाएगा, न्यूज से पहले हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो रेट बढ़ने वाला है या नहीं। ठीक है, और जब रेट बढ़ जाएगा तो उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। तो एज ऑफ नाउ द व्यू ऑन ग्लोबल इक्विटी मार्केट, नहीं सॉरी, यूएस इक्विटी मार्केट इज स्टिल बुलिश। Okay, nothing has changed. The sharp fall again looks like an opportunity to go long. Now, this view will change only if we start closing below this trend line. Okay, which has not yet happened. So unless it has happened, let's not get ahead of us. Let's see if it happens this week or not. Okay, so high possibilities again that we see prices going below this trend line and then closing out this trend line and then the bull run continues. So that's the expectation that I have. Okay, let's talk about dollar index. Okay, so dollar index is doing nothing but still this is a corrective formation of this big downward move, five wave move. Okay, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था 1 2 3 4, और ये फोर्थ वेव इसका चल रहा है और फिफ्थ वेव आने वाला है। So there is nothing else but this is a corrective formation. So no way it's a bullish formation. Okay, plus like we discussed, this is a very strong supply zone for dollar. Unless and until it goes and closes above this, we don't have to fear anything. All the falls in equity markets we will be using to get long only. Okay, तो अभी अभी डॉलर ने बढ़िया इस वीक में क्लोजिंग दी है, बट माय एक्सपेक्टेशन ऑन डॉलर इज कि ये यहाँ से ज्यादा वापस इसको टच करेगा एंड फिर ये नीचे ही आने वाला है, एंड नेक्स्ट जो फॉल होगा दैट विल बी वेरी ब्रूटल एंड वेरी फास्ट। ओके, तो it might happen, big possibility that in this week we might see a significant drop in equities. Okay, but that drop will be an opportunity to buy. Last week भी मैंने बोला था कि we can see a drop to sideways movement which happened. Okay, this week looking at the dollar index and looking that the closing is good, it might still bump up a little bit up, and that will cause a little bit more drop in the equity markets. But the closing, I'm pretty sure by Friday, coming Friday, we will be starting a new up move for sure. So now this week, what we have to focus, we have to focus on the support side. Okay, and we have to see which are the areas of support. And if we find Nifty and Bank Nifty near those areas, that's where we will look to buy. Okay, so that is the idea for trading this way. Crude oil देख लेते हैं। तो क्रूड में हमारा ऑलरेडी बाई कॉल था,
Now crude is near this trend line. Okay. Increase in dollar, which we are expecting a little bit, again, 4 to 5% increase in dollar that we are expecting this week might cause a little bit again a drop in crude prices. Okay. But crude is at a very strong demand zone. This is a very strong demand zone for crude, from which we gave the buy call and it has already moved up. So even if crude comes down a bit again, it will be something which I'm expecting to break out and go higher only. Okay, so crude again is something unless and until it breaks this area of 4650 on a weekly chart, we are still going to be long. A small drop might come, but that will again act as an opportunity to buy. So right now, looking at these few parameters, it's very clear that we might see a little bit of more volatility on the downside in the coming week, but that is mostly going to be an opportunity to buy, okay, not to panic and sell. Midweek मैंने एक वो मैसेज डाला था सबको, don't get trapped on the highs, okay, and I hope you guys heeded to that. And the major reason for doing that was because dollar index has a little bit of headroom to go up, okay, and that's why I'm expecting our equities market to still come down a bit, but that opportunity will pick up with both hands and will go long. Okay, we are not looking to short. So Monday and all, अगर market gap down होता है, don't go and short it. Okay, we'll be mostly looking to catch it near the support and go long, not go short on them. So that is the view. Now, unless anyone has any questions, we can move on to the local markets. Any questions from anyone? चलो एक मिनट गाइस, ठीक है, चलो निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी में तो देखो, जब से इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था तब से तो निफ्टी बस भाग ही रही है, कुछ और नहीं कर रही है। एंड अभी भी there are no signs that Nifty is going to reverse the trend. Okay. The only problem on Nifty is that if you see the momentum, there is a little bit of divergence. Okay. तो divergence अगर मिलता है तो उसका क्या मतलब होता है? Anyone? What does the divergence show? अगर मार्केट में आपको divergence मिलता है, what does it mean? And how you react? पार्टिसिपेशन कम हो गया है। Okay, good. Anyone else? क्या करोगे फिर अभिषेक उस पे, पार्टिसिपेशन कम हो गया है तो? अब जैसे अभी प्रीवियस ट्रेंड से ऊपर था, अपसाइड था, अब पार्टिसिपेशन कम हो तो मतलब इस वीक मुझे लग रहा है कि इससे मार्केट साइडवेज हो सकता है। साइडवेज डाउन साइड तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये साइडवेज हो सकता है थोड़ा, मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, एनीवन एल्स? मोमेंटम अगर कम हुआ तो व्हाट यू विल डू? देखो, मोमेंटम कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड इंटैक्ट है अभी। लाइक अभिषेक वाज सेइंग, मोमेंटम बस कम होने का मतलब ये हुआ कि हाँ, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो गया, पीपल आर ए लिटिल बिट मोर कॉशियस बाइंग एट दीज लेवल्स। होना भी चाहिए, कोई भी समझदार इंसान इतने ऊपर अगर खरीदने जा रहा है तो ही हैज टू बी कॉशियस। So whenever there is a divergence in momentum, doesn't mean you will go and sell. You never trade against a trend, but it just signifies that yes, momentum is reduced. So you should either have very small stop losses, you should trail your stop losses very tightly, and you should have a small position size. Okay, but that doesn't mean you'll go short. Also, it means you should not create new longs. Okay, that is the only message. Doesn't at all mean that you'll go short. So अब निफ्टी में जैसे हम देख रहे हैं डाइवर्जेंस है, तो we should be cautious. And also dollar index is showing that yeah, we need to be a little bit cautious. So निफ्टी में might possible है कि this week we might see a little bit of
downtick, but that again, that downtick will look to buy. Okay, so निफ्टी में अब हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू सी कि कहाँ पे हमारे पास डिमांड सप्लाई जोन्स हैं, तो उसके लिए थोड़ा छोटा चार्ट खोलते हैं to see can we find any good demand and supply zones of Nifty. So see, this is one area. This is one area where we can see a bit of support. 16,700 के आसपास. So अगर 16,700 के पास निफ्टी आता है, should be our plan should be to buy. Okay. Another area which is very clearly evident is this. Okay. This is what 17,000 के आसपास, 17,000, 17,100 is another level. Okay. So the plan should be कि अगर निफ्टी गिरता है, ठीक है, सबसे पहले तो निफ्टी का ये एक सबसे छोटा आप एक मान सकते हो डिमांड जोन है. तो पहली चीज तो ये है कि अगर निफ्टी इसके नीचे जाती है, व्हाट इज दिस लेवल 7,250 के आसपास, तो यू विल book all your longs, you will exit that. Now the moment it reaches 17,000 level, 17,050 and 17,001, that's where you will look to buy. Okay, so this is where you can buy, but you can never be too sure. It might happen that it can go up again and falls again. Okay, so यहाँ पे जब तुम बाई करते हो, अपना स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे रखो, ऊपर जाता है तो ऊपर जाता रहता है, यू मेक मनी, यू कीप ट्रेलिंग. से नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे है, आप निकल जाते हो ट्रेड से. फिर उसके नीचे जब गिरता है, देन दिस वुड बी द लेवल अराउंड 16,700 वेयर अगेन यू विल बाय. एंड जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि इस लेवल के हम नीचे जाने वाले हैं. सो दिस वुड बी the level, final level where you can buy 100%. So this might be a level where you can buy 50% of your risk taking appetite. And this, if you see, this is the level where you should buy 100% of your risk taking appetite, because you have a very good risk reward in place. Okay, so let's see which happens, but that will be the trade plan. First level you have to see 17,250. Okay, वो अगर गिरता है तो आपको अपने सारे लॉन्ग से निकल जाना है. ठीक है, उसके बाद वेट करो, यहाँ पे पहुंचता है 17,000, 17,050 के पास, यू शुड गो लॉन्ग. ओके, जैसे ही ऊपर जाए, यू ट्रेल योर स्टॉप्स टू कॉस्ट. वापस गिरना शुरू होता है, यू विल एग्जिट एट योर कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस. नीचे और जाता है, कीप वेटिंग कीप वेटिंग. द मोमेंट इट रीचेस 16,600, 16,700, again you buy full quantity and be long. So that's how you have to trade Nifty. Clear everyone? Yes. Yeah. ठीक है. और देखो, निफ्टी स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी. इवन द स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी, इफ यू विल सी ना, द क्लियर कट बुलिश फॉर्मेशन. Elliott wave terms में also it is a very clear cut impulse wave. Okay, अब आते हैं बैंक निफ्टी का. देखो, बैंक निफ्टी में थोड़ा नाटक है. बैंक निफ्टी का जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, anyone who wants to tell me what is the type of structure this one is? Elliott wave वाली बुक पढ़ी है आप लोगों ने? ये फोर्थ वेव का करेक्टिव है ना ये वाला? हाँ, ये करेक्टिव वेव है. ये देखो, ये बिल्कुल भी आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि ये एक बहुत क्लियर कट इम्पल्स वेव है. दिस इज अ करेक्टिव वेव. एंड व्हाट इट लुक्स लाइक मोर कि ये हो सकता है आपका एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जिसका ये W है, ये X बना और ये Y बनेगा, और ये पूरा आपको एक फ्लैट फॉर्मेशन की तरह दिखेगा. तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है. ठीक है, अगर निफ्टी में हमें करेक्शन दिखा तो भी छोटा रहेगा, बट बैंक्स आर वन प्लेस where we can see a big correction in place. Okay, and this might sound ridiculous, but banks में
करेक्शन आता है तो बैंक्स 30,500 तक भी जा सकते हैं. सो लाइक इट्स अ बिग करेक्शन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन बैंक्स. बैंक्स में कल को करेक्शन होता है, सो वी कैन वेरी इजीली सी 4-5,000 पॉइंट का फॉल दैट कैन हैपन. ओके, नाउ सिंस करेक्टिव वेव्स जो होते हैं लॉन्ग ड्रॉन आउट होते हैं, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो पूरा 5,000 पॉइंट का 6,000 पॉइंट का फॉल आपका एक दिन में हो जाए. इट माइट टेक सम टाइम. ओके, क्योंकि टाइम करेक्शन भी फोर्थ वेव में बहुत होता है. इट माइट हैपन इन स्टेप्स. ओके, इट माइट हैपन समथिंग लाइक दिस, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया. बिकॉज फोर्थ वेव इज वेरी cumbersome एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस. फोर्थ वेव में फिफ्थ वेव आने का लास्ट वेव होती है, फिफ्थ वेव आने से पहले फोर्थ वेव होती है. एंड फोर्थ वेव दैट्स वाई, क्योंकि लास्ट वेव आने वाली होती है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम करेक्शन इन प्लेस. बिकॉज जो आपका थर्ड वेव होता है वो बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है. आप देखो ये थर्ड वेव है आपका, ये कितनी फास्ट ऊपर गया है. दैट्स वाई फोर्थ वेव मोस्ट ऑफ टाइम्स यू सी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो बैंक निफ्टी लुक्स अ बिट वीकर. ओके, बैंक निफ्टी में try to avoid getting trapped on the highs. That's why I asked you guys to book out your profits. अच्छा, हमने profit already बना लिया है बैंक निफ्टी में, so we booked it out. Now we'll see what is happening on banks. I am expecting कि अगर ये गिरता है तो फिर भाई बहुत तगड़ा गिरने वाला है. ठीक है, अब वो गिर के कहाँ रुकता है वहां से हमें मैसेजिंग मिलेगा नेक्स्ट वेव की. सो अगर जब ये गिर जाएगा उसके बाद जो लास्ट मूव आएगा ना, दैट विल टेक अस टू समवेयर अराउंड मिनिमम 40,000 to 45,000 लेवल्स तक हम जा सकते हैं. बट वो अभी एक फॉल जो है that looks like अभी it's remaining in bank nifty. So banks are still not bullish. Okay, and that's why try to avoid getting trapped on the highs in banks. Okay, clear guys? Anyone, any question? What is the time period seen in fourth wave, Ashutosh? Is there any kind of pattern that can be seen? No, see, time correction is something which is very difficult to predict how much time. Okay, but the one thing that you can say, the faster the third wave is, the longer the fourth wave is. जितना फास्ट आपका थर्ड वेव होगा उतना ही लंबा आपका फोर्थ वेव होगा. एंड थर्ड वेव इज वेरी फास्ट, स्टीप, काफी स्टीप है. तो फोर्थ वेव माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम. ओके, अब बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा? एनीवन हु वांट्स टू से टेल व्हाट दे थिंक? एनीवन? So sell 38,000 call option. That is one way. But when will you sell? So when it breaks the trend line, the short-term trend line. That's also one way. Anyone else? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इतना बड़ा फॉल आना है तो लोग ट्रैप भी होने चाहिए. ठीक है, इतना बड़ा फॉल अगर आना है तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल शुड बी लॉन्ग. अगर लोग लॉन्ग नहीं होंगे तो ये फॉल कैसे आएगा? राइट, आ ही नहीं सकता है. कम लोग लॉन्ग होंगे तो फिर कैसे आएगा? पॉसिबल नहीं है. दूसरा, जहां तक ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हो उसमें भी एक प्रॉब्लम है. ट्रेंड लाइन वाला नॉलेज दुनिया जहां सब लोग जिनको कुछ नहीं आता वो भी ट्रेंड लाइन ही यूज करते हैं. तो ट्रेंड लाइन पे ब्रेक होने पे भी अगर फॉल आता है दैट विल आल्सो नॉट बी दैट फास्ट. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी. तो फॉल आने के लिए जरूरी है लोग ट्रैप हों अगर फास्ट आना है तो. ठीक है, अब देखो दो चीजें, और जो मेरा एक्सपेक्टेशन मैं बताऊं, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि ये हमारा सप्लाईज होना बैंक निफ्टी में. मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी पक्का इसको ब्रेक करेगी. ठीक है,
पक्का ब्रेक करेगी, people will go long on the breakout, and that's when a lot of people will be trapped. And I am expecting fall will, if it has to come, a fast fall has to come, then it will come from 38,200 levels, somewhere around that. पूरे कन्विक्शन जब सबको हो जाएगा कि हाँ भाई 38,000 क्रॉस हो गया है, तब जाके सेलिंग आएगी, एंड देन वी विल सी फॉल अप टू 30,000, अगर ये होता है तो। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसी वीक में कभी ये ब्रेक हो जाए और फॉल है, तो ट्रेंड लाइन से जो फॉल आता है उसमें मजा नहीं है, उसमें ज्यादा लोग नहीं फंसते हैं, क्योंकि पूरी जनता, सबको पता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ निकलना ही है। तो उस केस में जो फॉल होगा दैट विल बी लिमिटेड। इन दैट केस माय एक्सपेक्टेशन विल बी कि ये आपका एक डिमांड जोन है, और फिर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है देन आई लुक टू बाई हियर, ठीक है, बिकॉज in that case not much people will be trapped, and not much people will be trapped, then the fall will not be more. So a flat formation, जब मैंने आप लोगों को कोर्स में पढ़ाया था तो उसमें दो तरीके का फॉर्मेशन था, तीन तरीके के फ्लैट फॉर्मेशन थे। एक आपका रनिंग फ्लैट था, दो और थे मुझे याद नहीं आ रहा। फ्लैट तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका फ्लैट फॉर्मेशन, ये आपका पहला ए बना, ये आपका ऊपर गया और ये फॉल ऐसा आया, इसके बाद जो आप मूव होता है दैट इज नॉट दैट फास्ट, ओके। दूसरा क्या होता है, आपका फ्लैट फॉर्मेशन होता था कि आपका ये गया, बराबर लेंथ तक पहुंचा जैसा अभी इसमें दिख रहा है चार्ट में अभी, और फॉल आपका पूरा नीचे तक नहीं आया, बी वेव तक, ये यहीं तक रह गया। इस केस में आपका मूव जो होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है। सो दोनों केस में अप मूव तो गिवन है, होगा उसके बाद फॉल के बाद, बट द इंटेंसिटी ऑफ द अप मूव विल डिपेंड कि फॉल कैसा होता है। अगर हमें कल को ट्रेंड लाइन वाला ब्रेक देखने को मिलता है फॉर एग्जांपल, एंड फिर हम यहाँ से होते, ये हमारा जो मूव होगा बहुत फास्ट एंड फिरोशियस होगा एंड कैन गो अप टू 45,000, देन ओके, दैट देन माय टारगेट विल बी अराउंड 45,000 ऑन बैंक निफ्टी। कल को अगर 38,000 के ऊपर जाता है फिर गिरता है, देन फॉल विल बी मोर, but the ensuing uptrend might not be that strong, and we can expect then 42,000 only. Okay, so that is the overall idea that I am trying to tell you guys. That's how we'll keep target and why. This is clear, guys. But one thing is very clear. Just repeat once more, Ashutosh. Yeah, just be very clear on one thing. 30, ये जो आपका लेवल है सप्लाई जोन है, इसके ब्रेकआउट पे डोंट गो लॉन्ग, okay, be very clear. I will go long only if I start seeing bank nifty close above 38,500, कम से कम 38,500 38,000, दो सपोर्ट जोन जब मेरे पास रहेंगे ऑप्शंस पे, then only I look to go long. But 38,500 के नीचे जब तक है बैंक निफ्टी, चाहे ये ब्रेकआउट हो जाए, we will not go long, okay. The only reason is this is not a bullish formation, this is a corrective wave, and corrective wave अगर है ये तो ये 1 2 हुआ है, 3 बचा है, and all corrective waves are 3 waves pattern, तो तीसरा वेव बचा है और उसकी जगह नीचे ही है। So that's why for me to go long on bank nifty has to close above 38,500. Only if bank nifty starts closing above 38,500 levels, I will go long. 38,500 के जब तक नीचे है, I will look to short only. I will not look to go long. Clear, guys? Yeah. Yeah. And obviously ये तो एकदम clear है, ये trend line break होता है तो short जाना ही जाना है. Okay, so don't be long on banks. Nifty is still good. Okay, Nifty, even if you go long, other sectors will support you, can make some money. Okay, if you trail stops nicely. But bank nifty strictly avoid, don't go long on the breakouts. हाँ, intraday में if you want, obviously ये अगर break मिलता है तो it can take it bank nifty for 200 to 500 points upwards. So intraday में you can make money, but do not carry your long trades. Swing trade long नहीं होना चाहिए bank nifty में. That is the message. Clear?
Yeah, any questions, anyone? तो असली जैसे आपने 38,500 बता रहे हो ऊपर का, जैसे कि ऊपर का क्लोज होगा 38,500 के तो आप लॉन्ग जाओगे। हाँ, आपने ये लेवल, जैसे मैं भी सोच रहा था कि 38,000 के ऊपर अगर ये क्लोज हुआ, क्योंकि नहीं 38,000 के तो ऊपर क्लोज होगा ही ना यार, लोगों को फंसाने के लिए, वो तो पहला लेवल है। वही 38,000 के ऊपर तो मतलब क्लोज होना बनता ही है, नहीं तो फिर वही जैसे तुम सोच रहे हो सारी जनता वैसे ही सोचती है ना, 38,000 के ऊपर तो होगा तभी तो लोग लॉन्ग जाएंगे। तो दैट इज तो लाइक, देखो मार्केट में यू ऑलवेज हैव टू सी व्हाट इज दैट 5% जिसका चांस सिर्फ 5% होने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसका चांस 5% होने का होता है वही होता है जिसका, मार्केट में देखो दो तरह के लोग हैं, ठीक है। मार्केट में तुम्हारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन लोग कम है, और फिर मार्केट में दूसरे लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनके पास पैसा कम है बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो लोग कम है और पैसा ज्यादा है, दे कैन ट्राई एंड मैनिपुलेट द मार्केट। जिनके पास पैसा कम है लेकिन जो लोग ज्यादा हैं आपके, ठीक है, वो रिएक्टिव होते हैं, वो प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। आप हम क्या करते हैं, वी why we make losses, why retail people make losses, because retail people do not make the market, they do not decide the trend of the market, they act on something, okay। so होता क्या है कि अब अगर मैं एक बड़ा आदमी हूँ, ठीक है, और मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, तो मुझे पैसा कहाँ से आएगा, यहीं से तो आएगा, ये जो इतने सारे लोग हैं, जब मैं इनको बेवकूफ बनाऊंगा तब जाके मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। इन सारे लोगों में यूनिजन ऑफ थॉट नहीं है, ये सारे एक तरीके से नहीं सोचते क्योंकि बहुत अलग अलग लोग हैं। यहाँ मैं अकेले हूँ, मुझे पता है मेरा प्लान क्या है कि हाँ ठीक है एक ब्रेकआउट कराऊंगा, ये सारे चूतिया एक साथ, क्योंकि ये सारे चूतिया एक चीज जानते हैं कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना है, ये इन सबको पता है। तो मैं क्या कराऊंगा, एक ब्रेकआउट कराऊंगा, इन सबको लॉन्ग ले जाऊंगा, इनको पूरा कन्विक्शन कॉन्फिडेंस दूंगा कि हाँ लॉन्ग हो रहा है, और उसके बाद मेरे पास पैसा ज्यादा, मैं अपने सारे, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं यहाँ पे जब सेल कर रहा हूँ, मेरे पास क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हैं, ये सारे मिलके मेरे शेयर्स खरीद रहे हैं, राइट। तो अभी क्या है, यहाँ पे ऐसा सब स्ट्रक्चर बना हुआ है, सप्लाई जोन है, तो अभी मैं क्या करूंगा, बाई करूंगा। अभी मैं बाई करूंगा, अपने खूब सारे पैसे हैं मेरे पास, इन सबके शेयर्स में बाई करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा। ऊपर ले जाऊंगा तब ये इन चूतियों को अब समझ में आएगा कि अच्छा ये तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये चूतियों जिन्होंने अपना शेयर बेचा था अब ये खरीदना शुरू करेंगे, और जब ये खरीदेंगे तो कौन बेच रहा होगा, ये मैं ही बेच रहा हूँ, मैं बेचूंगा, फिर उसके बाद मार्केट गिरेगा, देन ओनली फिर इनकी फटेगी जब वापस ये इस लेवल के नीचे आएगा, ठीक है। जहां से ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट लेवल से जब नीचे आएगा कंफर्म हो जाएगा, फिर ये इन चूतियों को फटेगी, क्योंकि इनके पास वैसे भी पैसे कम है, इनकी रिस्क एपेटाइट कम है, और फिर ये सब सेल करना शुरू करेंगे, और जब ये सारे भी सेल करना शुरू करेंगे, मैं भी सेल कर रहा हूँ, तो फिर मार्केट बहुत नीचे जाएगा। सो दैट इज हाउ things happen in market, okay। So let's start thinking like that instead of thinking in the very traditional way of breakouts and all of that। Psychological समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मुंह माया है, ठीक है। सो 38,000, इसीलिए आई विल नॉट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू 38,000। वाई 38,500, क्योंकि 38,500 पे जब ऊपर जाता है तो मेरे पास दो लेवल ऑफ सपोर्ट आ जाते हैं, एक तो 38,500 पे ऑप्शन राइटिंग, और एक 38,000 पे। ऑब्वियसली आई विल सी दैट आल्सो हाउ मच ऑप्शन राइटिंग इज देयर एंड एवरीथिंग, बट देन आई हैव टू लेवल्स ऑफ सपोर्ट दैट विल देन गिव मी कॉन्फिडेंस, हाँ भाई नाउ आई कैन गो लॉन्ग। बट 38,000 तो वैसे भी क्लोज होना है, 38,000 के ऊपर, 38,000 के ऊपर होगा नहीं तो लोग लॉन्ग कैसे जाएंगे। तो सारी जनता को पता है कि 38,000 के जितने भी ऑप्शन राइटर हैं, आप इधर ट्विटर ट्विटर पे देखते होंगे, सबका स्ट्रैंगल ही यही बनता है, 38,000 के पास 38,200 400 600 बेच दो, नीचे दूसरा कुछ बेच दो, ऐसे ही। सो फंसाना है लोगों को, फॉल बड़ा लाना है, तो 38,000 तो एनी वे हैज टू गो, okay। So for me I will go long only if I start closing above 38,500 on daily chart, okay। Clear guys? सर हम्म सर ये इतने टाइम से 38,000 नहीं ब्रेक कर रहा है, तो जनरली कॉल ऑप्शन उसमें 38,000 पे काफी होंगे।
तो जब वो कॉल अनवाइंडिंग होगी तो वो तो ऑटोमेटिकली 300 400 चला जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने क्लोज बोला ना, कहाँ जाए उससे मेरे को मतलब नहीं है, क्लोज कहाँ होता है उससे वो इम्पोर्टेंट है। कॉल अनवाइंडिंग होगी जाएगा, इसीलिए 500 के ऊपर 600 चला जाए, 700 चला जाए, बट डे में क्लोज कहाँ होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? दैट विल टेल मी कि इफ पीपल आर बाइंग एट दोज लेवल्स और पीपल आर सेलिंग एट दोज लेवल्स। इफ इट इज अ रियल ब्रेकआउट, पीपल विल कीप बाइंग। ओके, जैसे निफ्टी में आपका हुआ, निफ्टी ने जब ये लेवल ब्रेक किया, लोगों ने खरीदते रहे, ऐसा नहीं होगा लोगों ने सेल किया, पीपल केप्ट बाइंग। उसके बाद साइडवेज मूवमेंट हुआ, गिरा नहीं, फिर पीपल केप्ट बाइंग बिकॉज दिस इज अ रियल ब्रेकआउट। ओके, so that's why I am interested in seeing the close. Where it is going intraday is least of my concern. सर Clear? कॉल अनवाइंडिंग से ऊपर क्लोज नहीं हो सकता? नहीं नहीं यार, क्लोजिंग नहीं हो सकती है ना। कॉल अनवाइंडिंग तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, पैनिक सेलिंग, शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग एंड ऑल, ये तो रिएक्टिव ट्रेड्स है ना, ये प्रोएक्टिव ट्रेड्स नहीं है, दीज आर रिएक्टिव ट्रेड्स, राइट? ये हो गया तो अरे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, रिएक्टिव होती है, right? That's why you see big movements after stop losses, right? Yes. For closing, people have to keep buying at those levels. That is not reactive, that is someone making a sensible decision ki yes, this level is good for me to go down, and that's why close is the most important price in any time frame. Okay, clear guys? Clear. Sensor, are we talking about weekly close or any? Daily close 38,500 is something I'll be looking for daily. Weekly में थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा ना, I might miss out on a good trade, right? Obviously risk will be more than weekly, but yeah, it's better. 500 पॉइंट का रिस्क तो ले सकते हैं ना, अगर 6,000 पॉइंट का टारगेट हो तो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर गाइस? Yes. चलो भाई, अब आईटी देखते हैं। तो आईटी का चार्ट देख के गाइस क्या लग रहा है? एनीवन? एक लॉन्ग बुल रन के बाद जो ऊपर है, थोड़ा प्राइस में हॉट लिया है, सेलर मतलब थोड़ा एक्टिव हुए ऊपर के रेंज पे। Yes. Anyone else? If the dollar is weakening, the IT industry will benefit. Therefore, the anticipation is that though in the short trend it may fall to some extent, but ultimately for it is better to go long on IT. So again, like how will you go long? Where will you decide to go long? Probably, I would look at two candles, 2-day daily candles below, maybe around 34,000, 34,200 levels. 34,000 and what else you said? 34,200 levels. 34,200. अभी एक चीज मैं बताता हूँ, इलियट वेव्स अगर पढ़ोगे ना तो देयर इज अ लॉ ऑफ अल्टरनेशन। लॉ ऑफ अल्टरनेशन क्या बोलता है कि आपको पता है कि ये इलियट वेव 1 2 3 4 5 में होता है, राइट? अब उसमें लॉ ऑफ अल्टरनेशन क्या होता है कि अगर ये 1 है, टू डीप करेक्शन हुआ, तो डीप करेक्शन हमेशा फास्ट होता है, ठीक है? तो आपका फोर्थ वेव जो होगा वो लॉन्ग ड्रॉन होगा और डीप नहीं होगा, ठीक है? और फिर फिफ्थ होगा। सिमिलरली अगर आपका टू लॉन्ग ड्रॉन हुआ, डीप नहीं हुआ, तो जो आपका फोर्थ होगा वो डीप होगा और फास्ट होगा और फिर फिफ्थ आएगा। अब आईटी में चार्ट देखो, अगर ये शॉर्ट टर्म का सिर्फ इतना पोर्शन देखो, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इतना देखो, तो ये अगर इम्पल्स वेव है और ये 5 वेव होनी है, तो उसमें ये 1, ये था 2, ये था 3 और 4 आएगा और फिर 5 होगा, राइट? अब सीन क्या बनता है कि ये जो 2 था आपका, ये बड़ा फास्ट और छोटा था, तो जो 4 है, ओके, 4 can be a bit deeper. Okay, so in IT, if there is a fall which comes,
My expectation is that fall can come up to the level of 32,500, 32,600 levels. Okay. Now, obviously, we'll draw a one trend line. Okay. And we'll wait and watch. But mostly, my expectation is that अगर ये fall आता है, then it will come till the level of 32,500, and then again it will start moving up. Now, since this is a bullish index right now, lot of people are not letting it fall. This fall might be long drawn, it will not be fast. Okay, what do I mean by that? I mean by that कि ये जो आपका जर्नी होगा आईटी का from the level of 34,800 to potentially 32,500, that will not be a straight line journey. Instead, it might be a long drawn process. It might, because three wave में इसको आना है, so it can be something like this. हो सकता है 1-2 वीक नेक्स्ट जो त्योहारों वाला टाइम हो उसमें आईटी में थोड़ा हमें वीकनेस देखने मिले और पैसा आईटी से निकल के goes to FMCG and other paint stocks and all, जिसमें हम already long है, reality हो गया ना. Okay, so IT is something which might be a little bit bearish for this week. Okay, this is the immediate trend line for IT. थोड़ा इसको टाइम फ्रेम कम करते हैं, में आएगा ट्रेंड लाइन. Okay, this is the immediate short-term trend line on IT, which is almost broken. Okay, so this trend line after breaking, what it will do? Sideways to up movement होगा ज़्यादा से ज़्यादा, sideways to down, and it might take a little bit time, and then once it reaches this major trend line, then it will start going up. Okay, so IT is again something look to avoid going long on the highs. Okay, and those who are long either exited, okay, or trail your stops very tightly. Okay, so this is not the sector we will look to buy. This view will change if again we see a new high. Okay, most likely that will not come. Okay, most likely we will not see a new high in IT in this week. Okay, even if it comes, then we'll have to see the momentum where it is. Okay, if there's a divergence, again avoid that, because then in that case it might happen that this becomes something like a flat correction taking place. Okay, so that we'll see midweek based on the momentum. I'll anyway update you guys. Okay, but for this week, avoid IT. Okay, avoid going long on IT. Look at booking your profits. Okay, we have been in long in IT since very long. बहुत पैसे बने हैं, अब IT से निकलने का अभी थोड़ा टाइम है, मीडियम टर्म. ठीक है? Clear guys on IT? Clear. चलो मेटल्स में आते हैं अब. क्या चल रहा है भाई मेटल्स में फिर? एनीवन? Is it in the fifth wave by any chance? Yeah, it can be. Anyone? देखो मेटल्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इन द सेंस कि ये तो क्लियर है, ये 1 2 3 4 5 है, ये भी क्लियर है 1 2 3 4 5 है, ये पूरा 1 है. इसमें क्या है कि ये 1 2 है, बट दिस कैनॉट बी 3 बिकॉज दिस विल बी स्मॉलर द स्मॉलेस्ट वेव, सो दिस कैनॉट बी 3. सो मतलब ये 1 2 3 4 और ये फिफ्थ हो गया. तो अगर मार्किंग करना स्टार्ट करें इसमें, it will be 1 2 3 4 5. और ये 1 2 3 4 5 is the part of 1 2
3 और इसका ये 4 और ये 5 आना चाहिए. Okay, this whole is a part of 1 2 और ये जहाँ पे 3 4 5. Okay, and then this whole will become a part of another 1 2 3 4 no, 3 4 5. So a bit complex to understand, but मोटा मोटी जो आइडिया निकल के आ रहा है कि दिस माइट बी वन ऑफ द फिफ्थ वेव, वन ऑफ द माइन्यूट वेव्स. ओके, इन अब उसमें दो केसेस हैं. उस हिसाब से ये जो है तुम्हारा ये करेक्टिव वेव है. अब दिस करेक्टिव वेव might be of two types. अगर ये सिंगल करेक्शन ओवर हो गया then we'll see metals going higher. The other thing can happen कि ये नीचे आया है वापस ऊपर जाए and फिर नीचे गिर जाए and उसके बाद आपका नेक्स्ट फिफ्थ वेव आए. So right now it is not very clear कि is this a fifth wave or not. ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखते हैं. अगर ये फिफ्थ वेव है तो ये 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया. तो 5 3 5 बन रहा है, मतलब 1 2 3. So metal is again guys looking weak. Okay, metals again is looking weak, and metals में जब तक हमें don't start seeing metals closing above this supply zone, तब तक we cannot say for sure that this is a fifth wave. Okay, this looks like 1 2 3 4 5 looks like complete, and then now a downtrend should start. Or either it can be 1 2 3 in this whole 4, and then fifth wave can go up till here. So दो चीजें जो दिख रही हैं, यहाँ तो ये 1 2 3 4 5 हो गया है, करेक्शन अब शुरू हो गया है तुम्हारा. या तो ये है सीन, दूसरा सीन ये है, ये 1 2 3 और ये 1 2 3 4 और ये फिफ्थ अभी आना बाकी है. सो इधर केसेस में metals can go up to the previous high, that is possible, but a new stronger up move will come only if we start seeing metal index closing above this supply zone of 5900. Okay, so right now we cannot say by full confidence ki whether it is in a impulse wave or a corrective wave. Okay, अब इसमें ट्रेड प्लान क्या होगा? वन वे टू ट्रेड इन दिस इज कि यू कैन बाई राइट नाउ, स्टार्टिंग टुमारो, मंडे को आप बाई कर लो, और ये इसका छोटा सा एक डिमांड जोन है. जब तक ये इसके ऊपर है यू कैन कीप होल्डिंग इट. ओके, दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस. बाई नाउ दिस विल बी स्टॉप लॉस, एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा. ये आपका लॉन्ग पोजीशन है, ये आपका हो गया टारगेट. ओके, सो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है. सो metals is one place where we can look to go long, but yeah, be cautious. Don't buy a huge quantity. Okay, so this is one place, yes, where we can look to create longs in this week, but we have to be cautious that we have to keep very small stops either, or buy very small quantity. Okay, because the upside looks limited. Clear guys? Any questions? तो मेटल्स में क्लियर है ना अभी क्या करना है? नॉट सेइंग टू गो शॉर्ट. मेटल्स में क्या करना है कि टुमारो इफ वी सी मेटल्स नियर दिस स्टॉप लॉस वी लुक टू बाई. जितना कम स्टॉप लॉस पे हम, ये स्टॉप लॉस है हमारा, इसके जितने पास खरीद पाए बेटर है. अगर ये ब्रेक होता है देन दिस ऑब्वियसली द लॉन्ग्स गो अवे, बट जब तक इसके ऊपर वी कैन बाई फॉर अ टारगेट ऑफ 5900. ओके, दैट इज द ट्रेड प्लान इन मेटल स्टॉक्स. ऑटो देख लेते हैं. हाँ जी, तो गाइस ऑटो में क्या लग रहा है? एनीवन?
ऑटो तो मुझे ऐसा ही नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश लग रहा है, क्योंकि जब क्लोजिंग हुई है तो वो उसने प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही सस्टेन किया है. Okay, anyone else? सर Breakout इज लग द पैटर्न जो आपने एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले. क्या वो? When sir you explained this pattern थोड़ी देर पहले that the price doesn't even reach the previous bottom. Corrective. वो बैंकिंग इंडेक्स में जो आपने बताया था. Yes, 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 yes. Anyone else? तो देखो लास्ट वीक जब हमने डिस्कस किया था ऑटोज, मैंने बोला था कि हम इस वीक में थोड़ा सब्र करेंगे क्योंकि ऑटो इंडेक्स ये ट्रेंड लाइन पे था and we said कि we'll wait. Okay, only if we start seeing it closing above this trend line we'll look to buy, and that has actually what has happened. Also good thing is that this whole pattern is coinciding with our festival season जहाँ पे auto sales number भी आते हैं, demand भी बढ़ती है. So auto is one index where our focus will be for this week. I'm expecting auto stocks to do very well this week. Okay, minimum it will test its recent high 11,000 per. So auto will be the sector in focus for. So this should be the sector of the week almost this week. ठीक है, ऑटो स्टॉक्स में हम देखेंगे, बाई कॉल्स उसी में मोस्टली आज मिलेगी हमें. ठीक है, because they are looking very bullish. And again, like Rishabh also mentioned, Abhishek said, here you see it's not does not touch its previous low. In fact, ये ऐसा फ्लैट फॉर्मेशन है जो कि उसके पहले ही रुक गया. So that means कि the up move can be a bit fast and very high. So auto stocks में we will start now exploring long options. And guys, जिन लोगों ने IT stocks मिस किया था, ऑटो में भी 10, 15, 20 हजार का प्रॉफिट बुक करके बस मत निकलना, कोशिश करना ट्रेल करो, एक एक स्टॉक 1-1 लाख 1.5 लाख प्रॉफिट देगा. ठीक है, बिकॉज बहुत अच्छा मूव मिलने वाला है ऑटोज में फॉर नेक्स्ट 2 to 3 weeks. ओके, सो बी रेडी टू बुक गुड मनी इन दिस, नॉट वो 5,000 10,000 खुचरा, मतलब चेंज मत इकट्ठा करना. ठीक है, उतना तो इंट्राडे में आ जाता है आपकी कॉल में. क्या हुआ? मैं बोला उतना तो इंट्राडे में आ जाता है. हाँ मतलब, लेकिन बहुत लोग है ना कि स्विंग ट्रेड लेते हैं, 10,000 रुपये बना के निकल जाते हैं, फायदा ही नहीं होता है स्विंग लेने का. तो हेज करो ताकि होल्ड कर पाओ, but hold it for long so that you make 80,000 1 lakh per trade. Okay, forget about month and half. So auto stocks would be the focus for this week. Clear guys on autos? क्या trade plan है? This is the sector we are looking to go long. Okay. Ashutosh, one yes, party spoiler probably maybe I've heard from 2-3 sources, at least from Maruti and Tata, कि there is a shortage of chips, electronic chips. वो chips के वजह से their production lines are not able to meet अच्छी बात है the market supply demand. That is good only ना. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस तो ऊपर ही जाएगा. अच्छी बात है, मतलब नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक ठीक ठीक. And by the way, I'll tell you guys, ऐसे भी prices बढ़ने वाले हैं महिंद्रा में. तो I know personally I had a meeting with the MD last week because they are our customers from Shell side. तो अगर आप लोगों को महिंद्रा की कार खरीदनी है, खरीद लो ऑलरेडी. उसमें ऑलमोस्ट लाइक XUV का, XUV 300 जो है, they are increasing prices by 18,000 to 24,000 per car. If anyone of you wants to buy, you can go ahead and buy it. And all these, when companies will do this price increase, that will again push the stocks high. Anyway, so अब देखो फार्मा में, फार्मा में यहाँ पे आया था जब हमने बाई दिया था, ऊपर गया. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन दिस जोन इज अ डिमांड सप्लाई जोन फॉर फार्मा. ओके, नाउ फार्मा के लिए देखो, फार्मा सेक्टर एज ए होल एज ऑफ नाउ there is no any kind of impetus, any kind of good news out of pharma. ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हो दिख रहा है फार्मा में होते हुए जिसकी वजह से फार्मा स्टॉक शुड डू गुड. सो मोस्टली आई एम एक्सपेक्टिंग फार्मा अगेन टू कम डाउन
unless and until it starts closing out the supply zone. Okay, so technically will go long on pharma. जो भी लोग long हो pharma में, जैसे अपोलो हॉस्पिटल में वो already निकल गए थे, ट्रेल स्टॉप लॉस सेट हुआ, अच्छा प्रॉफिट बना, निकल गए. So there are very few pharma stocks which we are long and we made money, we exited. Okay, now we'll look to go short on pharma. Okay, if we see a weakness, okay, not right away. Okay, we'll look to buy only if it starts closing above this supply zone. Okay, which looks very tough. Seeing that कि कुछ है ही नहीं ऐसा, अभी कोई न्यूज ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं. मतलब इवन कोविड भी अभी थोड़ा ठंडा ही लग रहा है. ठीक है, सो अभी जब तक थर्ड वर्ड वेव नहीं आने वाली है तब तक फार्मा में तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा. ओके, सो फार्मा स्टॉक्स लुक टू अवॉइड टू बाई नियर दीज हाइज. ओके, काफी लोग हैं, काफी आपको बाई कॉल्स टीवी पे मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं. टीवी वाले हमेशा ही लेट आते हैं. ठीक है, सो अवॉइड breakouts and all in pharma. Will look to buy only if it starts closing above this supply zone. As of now, just avoid pharma. Don't go and buy them. Mostly the idea will be to sell. So let's wait midweek. कहीं sell मिलता है, I'll anyway give it to you guys. Okay. तो अभी तक जो क्लियर कट एक स्टॉक है जो खरीदने लायक वो ऑटो है. बाकी हर जगह से पैसा निकलता हुआ ही दिख रहा है. आईटी, ठीक है, आईटी में से निकलता हुआ दिख रहा है. फार्मा भी लुक्स वीक. बैंक्स लुक लाइक दे विल आल्सो बम्प अप एंड देन दे विल फॉल. ठीक है, मेटल्स अगेन might bump up but then the upside is limited. Auto is the only sector looking good, so that is good. हर जगह से जब पैसा निकल के एक जगह जाएगा तभी तो वो एक सेक्टर भागेगा. ठीक है, so everything is falling in line now. FMCG should also be one sector which should do good and like expected. Last week से तुम तब से ही लॉन्ग है, अभी भी लॉन्ग है, still looking good. No point selling it out, keep trailing it. Marico is our buy call, doing very good. Keep holding it, keep trailing it. First target is being done. We'll see other stocks also in this sector, but yeah, very strong sector as of now. Okay, and looks, even the momentum is very good. So पूरा participation है. ठीक है, कहीं से कोई selling का pressure नहीं दिख रहा है. Still is looking very good, and this week can be fantastic for FMCG and auto. Okay, so these are the two sectors which will be focused for this week. Okay, clear guys? मीडिया देखो, लास्ट वीक ऑलमोस्ट जैसे बोला था, सिमिलर टू ऑटो जैसा चार्ट था, इसलिए बोला था कि इसको छोड़ दो, अभी देखेंगे. अभी भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है. ओके, अभी भी स्टिल बिलो दिस ट्रेंड लाइन. स्टिल अभी भी छोड़ दो. अच्छा किया इसने मीडिया स्टॉक्स ने इस वीक, बट वी आर नॉट लॉन्ग, वी अवॉइडेड इट. We'll avoid it this week also. Not a very clear-cut signal yet. Okay, so leave media stocks as of now. This week also, we'll see next week mostly. क्या हो रहा है, या तो ये ऊपर जाके नहीं गिरना शुरू हो जाएगा, we'll start selling it. अगर breakout मिलता है, then again we'll buy it. But as of now, again, avoid media stocks for this week. So reality was a buy. Okay. इस वीक ऊपर गया, ज्यादा अच्छा नहीं किया, इसलिए हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए. हम काफी स्टॉक्स जिसमें लॉन्ग थे, हम प्रॉफिट लेके निकल गए. बट दिस वीक अगेन इज लुकिंग गुड. ओके, ऑब्वियसली जो अभी हाई बना है रियलिटी सेक्टर में, उसके ऊपर जब जाएंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा. नहीं तो दिस माइट अगेन लुक लाइक a signal where people start selling it, and reality is one sector जब वो गिरता है तो गिरता भी बहुत तेज है. ठीक है, तो टाइम टू बी कॉशियस ऑन रियलिटी स्टॉक्स. जो लोग अभी लॉन्ग हो, नहीं निकले हो, ट्रेल करो टाइटली. ठीक है, डीएलएफ एंड ऑल से तो हम निकल गए हैं. ठीक है, दिस वीक विल हैव टू सी, थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा. ओके, इट्स नॉट वेरी क्लियर कट. स्ट्रक्चर इज वेरी गुड. ओके, स्ट्रक्चर वाइज वेरी गुड. News is very good. When economy opens up, reality stocks tend to do good. They were also very much beaten down stocks. Okay, so that's also one thing. But now most of them in last 2 weeks have already returned 20, 25, 30, 40%. Okay, so I will not be surprised if we see 5-10% correction before again it's starting to go up. So be a little cautious. Don't go and buy reality stocks on the top. Okay,
let them cool down a bit, and then again we'll look to buy somewhere near this trend line. Okay, so that would be the idea. In reality we'll also see individual stocks to see किसमें क्या कर सकते हैं, but मोटा मोटी आइडिया ये है कि ऊपर अभी अवॉइड करो खरीदना. Okay, we'll look to buy near the trend line unless there are few breakouts. So like सेक्टर का है वैसे ही किसी स्टॉक में वापस ब्रेकआउट दिखता है रिसेंट हाई के ऊपर, देन अगेन ऑब्वियसली वी डेफिनेटली बाय दैट. ठीक है. फाइनेंशियल शुड बी वेरी सिमिलर टू बैंक निफ्टी. तो देखो फाइनेंशियल्स ने शुरू कर दिया है लोगों को ऑलमोस्ट ट्रैप करना. दिस इज नॉट अ इम्पल्स वेव, दिस इज अ वेरी गुड करेक्टिव फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस. ठीक है. बैंक निफ्टी में यही चीज हो सकती है जो फाइनेंशियल्स में हो चुकी है ऑलरेडी. तो देखो ये फाइनेंशियल्स का आपका लेवल था जिसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, सस्टेन किया. ओके, सो बैंक निफ्टी में यही हमें इस वीक देखने को मिल सकता है. बट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग फाइनेंशियल्स टू गो डाउन फ्रॉम हियर. ओके, डोंट बी लॉन्ग ऑन फाइनेंशियल्स. इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे बट नॉट गिविंग सो मच कॉन्फिडेंस. ओके, so financials mostly like banks, I'm expecting them to go down. Okay, now that might be triggered midweek, tomorrow, जब भी हो. ठीक है, but yeah, I'm expecting them to go down. Mostly हो सकता है कल हमारा गैप डाउन अगर कल खुले मार्केट तभी हमें financials दिख जाए नीचे. ठीक है, so we'll see. कल की क्लोजिंग देखते हैं थोड़ा. ठीक है, अभी फिलहाल I don't want to comment right away क्योंकि टेक्निकली अगर सिर्फ ये इतना स्ट्रक्चर देखो तो काफी बुलिश है, शुड गो अप. बट अगर ये मैं पूरा स्ट्रक्चर देखता हूँ ओवरऑल, सो दिस इज अ करेक्टिव वेव प्लस देयर इज अ डाइवर्जेंस व्हिच मींस इट शुड बी नेगेटिव. सो विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक. थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं फाइनेंशियल्स पे क्या करना है. ओके, सो जो जो लोग लॉन्ग हो बुक कर लिया होगा ऑलरेडी क्योंकि मैंने मिड वीक कॉल दिया था एग्जिट करने को. जिन्होंने नहीं किया है, if there is a fall they will not get an opportunity to book the profits, that I can tell you for sure. Okay, so let's see. Abhi isme clear cut I don't want to make any comment, so we'll see tomorrow and day after what happens. Yeah, so clear guys on all the stocks sector. So all the sectors, what is the plan in each of the sector? Any questions, anyone? चलो गुड. सो अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का. 4:10 हो रहा है, 4:20 पे मिलते हैं. And then we'll start with the stocks. Okay, first we'll start with auto, FMCG, and then we'll move on to metals. ठीक है, उसके बाद we'll move on to pharma, बैंक निफ्टी, IT लाइन से देख लेंगे. ठीक है, सबसे पहले ऑटो FMCG कर लेंगे. ठीक है गाइस, सो 4:20 मिलते हैं. ठीक है, लेट्स गिव अस 10 मिनट्स ब्रेक एंड फिर लेट्स मीट.
Hello guys, everyone's back. Chalo, then we'll start. Okay, so let's start with auto only पहले. ऑटो से स्टार्ट करते हैं फिर एफएमसीजी पे जाएंगे. तो वैसे अशोक लेलैंड. Good risk reward trade. In fact, not a good risk reward. 1:1 only you will get, but yeah, it's one trade I'll look to avoid. Not that great. Okay, Ashok Leyland. If you have bought, you can keep holding with this, trend line as your stop loss. Target would be this recent high of 136, 137. Okay, a bigger move will come, and that is what I'll be looking above 140. Okay, once it starts going above 140, that's where I will be looking to go long. Okay, so until that, I'll reserve my call on Ashok Leyland, but yeah, it will become a rocket once it starts going above 140. As of now, I'll not suggest to go long on it. Amara Raja is another case where, right now we cannot give a long. Looks good, but yeah, sector is bullish doesn't mean that we'll go ahead and buy anything and everything. Okay, so again on Amara Raja also, the call to buy will come once it starts going above 745. Okay, let me put all these. Okay, so 745 के जब ऊपर जाना शुरू करेगा, then we'll look to buy. As of now, not a place I look to buy. The only good thing is it's near its demand zone. Okay, so let it close above this trend line. Also, जब 745 के आसपास जाएगा, trend line के ऊपर closing दे चुका होगा, that is when we'll look to buy. Okay, so keep these, triggers. TVS Motor. Yeah, so TVS Motor looks like a good buy. So this is one thing which can be bought tomorrow. Okay. TVS Motor is something which we can buy tomorrow with a stop loss of 530. Okay, so 530 के stop loss के साथ 530, 528, उसके stop loss के साथ TVS Motor can be bought. Okay, so look to buy. This should be one thing which we can buy. So अगर देखो कल से गैप डाउन मिलता है और आपको TVS Motor 530 के आसपास मिलता है, then go ahead and go long. Okay, this should be your stop loss. If you hedge, then you can even keep a little bigger stop loss of 500. Okay, but yeah, this would be the stop loss and the target would be on TVS Motor minimum 660 का. 660 मेरा टारगेट रहेगा इसमें. बढ़िया आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए इसमें कमा सकते हो. So this would be your target. Good risk reward is there. Balkrishna Industry again, गुड अप मूव. एक थोड़ा सा डाउन टिक हो सकता है देखने मिले. सो अब बाइंग करने के दो जगह हैं इसमें. एक हमारा बाइंग करने का जगह है ये,
2390, 2400 levels would be one place to buy. So अगर gap down मिलता है, you get it somewhere here, look to buy. Second place to buy would be on a breakout. Okay, so the second place to buy would be above this, which would be somewhere around 2520. So let me put a trigger here, 2500 के आसपास. Yeah. So these are the two places to buy Balkrishna. एक अगर ये गिरता है तो somewhere around 2390, 2380 you look to buy. Breakout मिलता है तो 2500 के ऊपर will buy. Okay, so these are the places to buy Balkrishna. Exide is again one stock which is an immediate buy. Okay, breakout, consolidation near this वापस trend line which will act as a support now. Okay, demand zone अगर बनाने की कोशिश करें हम, so this whole would be demand zone. Okay, so Exide is again one thing which can be looked to be bought with a stop loss below 175. So 175 के नीचे का stop loss डाल के Exide is also a buy for coming week. Again minimum target you can keep, पहले तो ये क्योंकि यहाँ पे selling हुई थी, so you can keep 204.5 का, उसके ऊपर जाता है तो सीधे 216 220 का target. Okay, keep making note of this guys. M&M has not yet given a breakout, but I will keep a trigger on this. 790 के अगर पास मुझे मिलता है M&M, ठीक है, ब्रेकआउट देता है ट्रेंड लाइन के ऊपर 790 के पास, so I will look to buy. Okay, as of now, देखो अभी भी खरीद सकते हो क्या? अभी क्या सीन है कि ये आपका M&M में डिमांड जोन है आपका और आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, सो अभी भी खरीद सकते हो M&M, ठीक है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 720 का स्टॉप लॉस डाल के खरीद सकते हो. कल को अगर गैप डाउन मिलता है 720 के पास मिलता है, खरीदो, हेज कर दो, ठीक है, जस्ट इन केस अगर ये ब्रेक होता है तो यू विल एग्जिट, बट हेजिंग की वजह से यू विल मेक मनी. ओके, सो दैट कैन बी वन वे ऑफ बाइंग M&M. ओके, सो आई विल एक्चुअली डू दिस. मैं कल M&M पक्का खरीदने वाला हूँ, ठीक है, अगर ये 720 के आसपास मिलता है, 25, 30, 35, आई विल बाय, आई विल हेज इट, बिकॉज इंडेक्स इज लुकिंग गुड. अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो इंडेक्स के जो मेन कंट्रीब्यूटर्स उनको तो ऊपर जाना ही है. ओके, सो M&M वुड बी वन अगेन स्टॉक व्हिच आई विल बी लुकिंग टू बाय टुमारो. ठीक है, similar structure, good thing this has already broken the trend line. Okay, Hero Moto obviously one of the bigger stocks in the auto sector, so has to behave like the sector itself. So again, this is a good buy. Okay, Hero Motor is a better buy than M&M. Okay, Hero Motor पहले सारा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसमें से टॉप 4-5 चूज कर लेंगे, ठीक है. तो हीरो मोटर अगेन कैन बी बॉट. लास्ट वीक का जो लो है उसको स्टॉप लॉस डाल दो, खरीद दो, ठीक है. अगेन इसमें फर्स्ट टारगेट रखो 3100 का, नेक्स्ट टारगेट रखोगे 3500 का, 3450 का. दैट वुड बी योर ट्रेड इन हीरो मोटो. पहला ये, दूसरा ये, ओके, लास्ट ये. दिस वुड बी हीरो मोटो. फिर आता है आपका टाटा मोटर्स. टाटा मोटर में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है. दिस आल्सो हैज गिवन यू a breakout above this trend line. Looks like this whole 1 2 3 1 2 3 ये पूरा correction looks like is complete, and now we can see a good up move in Tata Motors to the levels of 350 355 again. So this is also a good buy. इसमें एक और अच्छी बात क्या है, आपका ये डिमांड जोन जो है बहुत पास में ही है, छोटा सा स्टॉप लॉस है 277 278 का है. अगर आप में जितना पास खरीद लो इस स्टॉप लॉस के उतना बेटर है. एक और चीज ये है कि ट्राई टू हेज ऑल दीज थिंग्स, ओके, बिकॉज इफ यू विल हेज यू विल नॉट पैनिक कॉज ऑफ इंट्राडे, यू नो, स्मॉल मूव्स एंड
not exited in 10-15,000 profit. So again, this looks good to be bought. देख रहे हो, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, इसने भी देखो ब्रेकआउट दिया, गिरा, ट्रेंड लाइन पे। अब देखो क्या ये स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं, अगर लोगों को सेल करना होता ना तो ये सारे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होते हैं। ये सबका ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना इंडिकेट्स दैट पीपल वेर बुलिश, दे डिडंट लेट इट फॉल, द बिग इन्वेस्टर्स। So MRF is again one thing which can be bought. Okay, looks very good. Again, इसमें Sir, पहला, हाँ, so would you call this support क्योंकि there's no lower wick? no, I'll call it trend line पे है ना यार, सपोर्ट ही But अगर दिखना lower होता wick तो नहीं है. इससे कोई मतलब नहीं है। कैंडलस्टिक थ्योरी हर जगह कहाँ काम करती है, सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइस का बिहेवियर। प्राइस का बिहेवियर बस मुझे ये दिख रहा है कि ये क्लोजिंग इसने दी है ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्यों नहीं वो नीचे गई, जा सकती थी, 1000 पॉइंट और नीचे चला जाता तो नीचे हो जाता, क्यों नहीं गया। Sir, क्योंकि Friday छुट्टी थी. What happened? Sir, क्योंकि Friday was trading off. हाँ तो थर्सडे को चला जाता उसमें क्या है, जाना तो चाहिए था ना वो कोई, और ये ऊपर से उसके पहले इतना अच्छा बाइंग भी हुआ। ठीक है, दिस क्लोज इज ऑलमोस्ट एट 50% ऑफ दिस, राइट, स्टिल बुलिश। ओके, अनलेस एंड अनटिल इट गोज बिलो, एंड फिर आपका ये बढ़िया सा इसमें अभी क्या है, ये अच्छा खासा पास में ही आपका डिमांड जोन है। ओके, so unless this is crossed, you have to stay bullish. So this is again something which you can buy. Obviously, you can hedge it out so that in case it goes down, you don't panic. Okay, and you can add again something over here. तो आयशर का जो स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ अगर मैं इतना देखूं तो इट्स बुलिश, but this overall structure of iShare is corrective in nature. It's not bullish. iShare में थोड़ा वेट करते हैं। ओके, मिड वीक में अगर इसमें मुझे दिखेगा कॉल देने लायक तो आई विल गिव यू गाइस, बट एज ऑफ नाउ iShare में आई डोंट वांट टू गिव यू गाइस एनी कॉल। ठीक है, Bosch again very similar to all this Hero, Tata, MRF, very similar to that. So again we bought Maruti again very similar. Okay, an auto index अच्छा कर ही नहीं सकता अगर मारुति अच्छा ना करे। So again Maruti is something which can be bought with stop loss of 6560. Okay, so Maruti में 6560 का stop loss डाल के you can go long. भारत फोर्ज पे विल अगेन, इसमें मैं मोस्टली इंट्राडे कॉल दूंगा। ओके, लुक्स गुड बट not that good that I'll straight away jump into give you guys a buy call. Okay, so let's wait on Bharat Forge as of now. इसमें इंट्राडे में I'll give you guys call, but as of now नहीं। फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट हाई पे है, विक्स बहुत सारी हैं, सो अगेन इसमें विल रिजर्व द कॉल अनलेस एंड अनटिल इट स्टार्ट्स क्लोजिंग अबव द हाई। ओके, तो 1400 के ऊपर जब जाना शुरू करेगा देन विल लुक टू बाय। बजाज ऑटो सैडली नॉट स्टॉक व्हिच वी कैन बाय। सो देखो इसमें क्लोजिंग इसने नीचे दी है, दिस इज समथिंग व्हिच वी विल अवॉइड। बजाज ऑटो एज ऑफ नाउ स्टिल नॉट बुलिश। Okay, it has already gone below its trend line and closed below that, so we'll wait on it. Okay, so अब ऑटो इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो खरीदे जा सकते हैं? टीवीएस खरीदा जा सकता है, एक्साइड खरीदा जा सकता है, एमएनएम कॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड खरीदा जा सकता है, हीरो, टाटा, एमआरएफ, मारुति। ठीक है, सो ये स्टॉक्स ऑटो में खरीदे जा सकते हैं।
Okay, these are the stocks which can be bought tomorrow. Now you can choose each of them based on the stop loss and your risk appetite. Try to hedge it and stay long. Okay, and look to buy as close to the stop loss. That will benefit you. Okay, so that would be the ट्रेड प्लान एंड ऑटोज. अब देखते हैं एफएमसीजी. मारिको में हम ऑलरेडी लॉन्ग है. 575 का पहला टारगेट था, अचीव हो चुका है. ओके, स्टिल लुक्स गुड. कीप लॉन्ग ऑन दिस. नेक्स्ट टारगेट कैन बी 600 एंड 600 क्रॉस होता है तो 630, 640, 650. नेवर नो हाउ मच, हाउ these moves ना, ऊपर जब कुछ नहीं होता है ना, कहाँ तक चला जाए यू कैन नेवर नो. वन वे टू फाइंड इज इलियट वेव्स. ओके, इतना दिमाग लगाने की अभी इसमें जरूरत नहीं है. कुल मिला के ट्रेल करते रहो. ठीक है, 600 के ऊपर जाएगा तो 650 तक गिर देगा, 700 तक चला जाएगा. ठीक है, सो इसमें पहला टारगेट हो चुका है. बुक करना है कर लो. ठीक है, नहीं तो ट्रेल करते रहो. कीप होल्डिंग ऑन टू इट. सो मारिको इज स्टिल लुकिंग गुड. डोंट एग्जिट दिस. कीप ट्रेलिंग आई से. It can give you a good money. This is a new leg of a move that has started. डाबर ऊपर तो जा रहा है, बट डाबर में प्रॉब्लम यही है कि दिस इज अ करेक्टिव वेव फॉर्मेशन. दिस इज नॉट अ बुलिश वेव फॉर्मेशन. दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी कीन ऑन गिविंग बाय कॉल. बट हाँ, पीपल दोज हु वांट, तो स्ट्रक्चर ऐसा ही है. देखो, अगर शॉर्ट टर्म में छोटा छोटा अगर देखोगे तो इट्स फॉर्मिंग लाइक एक कैंडल, बड़ा कैंडल, फिर करेक्शन, फिर बड़ा कैंडल, फिर करेक्शन, फिर एक बड़ा कैंडल आ सकता है इस वीक. सो like that you can buy, but there are much better stocks. So that's the reason I'm avoiding. But yeah, if you're long on Dabur, keep holding it. I'm not giving a buy call because there are other stocks which can do much better. Imami is still meandering, so let's leave it as of now. Jubilant Food looks good. Okay, looks like new leg of move have started. So Jubilant is one place where we can again look to buy. Okay, so stop loss on Jubilant will be 3800. ओके, 3800 के जितने पास खरीद पाओ खरीद लो. टारगेट वुड बी मच हायर, अराउंड 4900, 5000 वुड बी द टारगेट ऑन जुबिलेंट. बीबीएल में बाई कॉल चल ही रहा है. कीप होल्डिंग, अभी भी बहुत ऊपर जा सकता है. ठीक है, सो बीबीएल से निकलने की जरूरत नहीं है. कीप होल्डिंग ऑन इट, कीप ट्रेलिंग इट. अभी इसमें भी अच्छे पैसे बनने वाले हैं. यूबीएल हैज आल्सो स्टार्टेड इट्स नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव, तो ये भी बाई है. ओके, अब इसमें वही है, volatile stock है. So instead of intraday, try doing swing trade with hedging. Okay, the moment it comes somewhere around 1500 levels, again look to buy. That will be the call. देखो 1599 तक चला गया. 1600 कब कॉल दिया था ये? 1400 के आसपास दिया था. यहाँ पे दिया था हमने कॉल 1400 के पास. ऑलरेडी 1600 पे, अभी और ऊपर जा सकता है. 17, 1800, you never know how these moves will pan out. So people who are long, keep holding. If it falls to 1500, we'll again look to re-enter. Okay, for those who have exited. Britannia also the same. Britannia ने काफी अच्छा consolidation के बाद ये अब move दिया था. Still continuing. Again Britannia में क्या है कि आपका 3950 levels जो है, if you find it closer to 3950, okay, look to buy. If you get near 3950, भाई देखो लास्ट वीक भी चांस मिला था. लास्ट वीक मैंने बोला भी था कभी मिले तो खरीद लेना. अगर लॉन्ग हो गए हो लास्ट वीक तो कीप होल्डिंग योर लॉन्ग. दिस वीक यू कैन सी मच हायर लेवल्स, 4400s, 4600 in place on Britannia. Okay, again in case you see it coming near 3950, look to buy. सेम यार, सेम कहानी है. बहुत रेसिपी वही, खरीदना ही है. टाटा कंज्यूमर. Tata Consumer में intraday, I'll let you guys know. Those who are long can keep holding, but as of now, we cannot directly go and buy in. In Unilever again, Unilever, Colgate, Palmolive, सब में एक ही सीन है यार. जो लॉन्ग हो खरीदते रहो, गिरे सपोर्ट पे आए खरीद लो इंट्राडे. अब देखो मेन जो ट्रेड है वो आईटीसी में है इस वीक का, जो मुझे लग रहा है दिस शुड बी द ट्रेड. आईटीसी का जो लग रहा है मुझे, टाइम आ चुका है. ओके,
So ITC, the moment it starts crossing 215 levels, okay, go long, it can give a move up till 240, 250. Okay, 215 के ऊपर अगर क्रॉस करने लगे ITC, then the move in ITC will come. Okay, big move will come. So keep this on your radar. This might be a very good. सारे सबने दे दिया है almost movement. ITC is one which is not yet given, but आना चाहिए अब. प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी दे दिया ब्रेकआउट, वॉल्यूम भी अच्छा है, क्लोजिंग भी अच्छी थी. प्रीवियस ये हमारा डिमांड जोन था जिसका हम वेट कर रहे थे. लास्ट वीक इसने क्लोजिंग इसके ऊपर ऑलरेडी दे दी है. सो अगेन दिस बिकम्स अ गुड बाय. ओके, just look at your nearest supports on your daily or hourly chart and accordingly you can buy it. Okay, मन है, पैसे नहीं है तो ऑप्शंस खरीद लो, इन द मनी ऑप्शन खरीद के रख लो. भाई है नेस्ले भी भाई है, मैकडॉनल्ड भी भाई है. So next week if we are expecting volatility to be high, तो तो वही तो मंडे को अगर गिरता है तो ये सब खरीदने का ना. जो स्टॉक्स बुलिश हैं, मार्केट गिरेगा तो वो भी थोड़ा गिरेंगे, जब गिरते हैं तो खरीदने का उन्हें. नहीं, बट ऑप्शंस क्यों सर, वॉलेटिलिटी ज्यादा. हाँ, तो वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो ऑप्शंस की प्राइस भी तो बढ़ेगी ना जल्दी. आईवी ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस भी तो बढ़ेगी. वॉलेटिलिटी ऑलरेडी नहीं आई है, मैं बोल रहा हूँ होगा. तो अगर तुम कल खरीदते हो, आईवी बढ़ती आती है, मार्केट गिरता है, तो तुम्हारे ऑप्शंस की भी प्राइस बढ़ेगी ज्यादा, राइट. And that is for people who don't have capital. If you have capital, you should buy most of it, most of them. So like, in fact, FMCG में ITC को छोड़ के ऑलमोस्ट सबने बाई दे दिया है. सब में बस आपको जैसे ही मिले और इमामी छोड़ दो. मारिको में ऑलरेडी हम लॉन्ग है. डाबर अगर लॉन्ग, मैंने कॉल नहीं दिया है, लेकिन दोज पीपल हु आर लॉन्ग कैन कीप होल्डिंग, कैन गिव अ गुड मूव दिस वीक. इमामी में नहीं है कुछ, चलो. जुबिलेंट में अगर कल को वोलेटिलिटी दिखती है, गैप डाउन होता है, यू सी द लेवल्स एज वी डिस्कस, यू शुड बाय. ठीक है, सॉरी, जुबिलेंट. वीबीएल में ऑलरेडी लॉन्ग है. यूबीएल में अगेन जैसे ही आपको 1500 के पास अगर गिरते हुए दिखता है तो फिर इसमें ये भी खरीद सकते हो. ब्रिटानिया ऑलरेडी लॉन्ग है. गोदरेज सीपी लॉन्ग है. टाटा कंज्यूमर मैं बताऊंगा अगर आपको मुझे कुछ मिलता है इंट्राडे में. यूनिलीवर ऑलरेडी लॉन्ग है. कॉलगेट पामोलिव लॉन्ग है. आईटीसी में ट्रिगर डाला हुआ है, अगर मिलेगा खरीदेंगे. प्रॉक्टर का गैम्बल लास्ट वीक ही बोला था, ये भी लॉन्ग है ऑलरेडी. नेस्ले लॉन्ग है. मैकडॉनल्ड, सब तो लॉन्ग ही है, इसमें अब कुछ करना ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम फ्यू. ओके, टाटा कंज्यूमर में मोस्टली इंट्राडे मिल जाएगा. ठीक है, तो वो बता दूंगा मैं. आईटीसी में ट्रिगर डाल रखा है 215 216 का, आप लोग भी डाल के रखो, मिले खरीद लो. ठीक है, बस बचा दो ही ऐसे स्टॉक है, डाबर इमामी, जिसपे मैंने कुछ बोला नहीं. उसमें भी डाबर अगर आपने खरीदा है तो यू कैन कीप होल्डिंग. इमामी ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, इसलिए आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. So this is how the FMCG sector is. ये तो ऐसे भी 2 वीक से लॉन्ग है, तो कीप होल्डिंग योर लॉन्ग्स. ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं, मीडिया. ओके, फिर रियलिटी. हाँ, सन टीवी में Ashutosh, I haven't entered into Marico. Can I enter now? Haven't entered in Marico. We'll discuss our metals. Just give me one time. Okay. Sun TV, the only good thing in Sun TV is near its demand zone. Okay, also if you draw a trend line, it will fall into the trend line. So that's the only thing. But when we have so many good trades in FMCG and auto, why will you go and buy Sun TV? So ignore it. PVR में तब से ट्रिगर लगा कर रखा है, जब तक ये क्रॉस नहीं करता है 14, 45, 50 का लेवल, तब तक PVR में कुछ नहीं करना है. जील अच्छा है. तो इस जील में क्या है ना, इसने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन कोई भी बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी. द ओनली प्रॉब्लम इन जील इज कि ये अभी एक देखोगे तो ये अपर जोन है आपका, जो पूरा डिमांड जोन है उसके अपर जोन पे. दैट इज द रीजन. सो आई विल नॉट येट सजेस्ट टू गो अहेड एंड बाय.
once it starts closing above 185 levels now, 185, 90 के आसपास, ठीक है, that's when I look to buy G. But as of now, still I will not. But mostly मेरे को लगता है इस वीक में 190 लेवल आ जाएगा, and तब देखेंगे उसके बाद कि क्या करना है। आइनॉक्स में कुछ नहीं, जागरण कुछ नहीं, टीवी 18 कुछ नहीं, ये सब ऊपर जा सकते हैं। वो डीबी कॉप भी अच्छा है, ये भी बहुत ऊपर जा सकता है, बट प्रॉब्लम यही है कि जब दूसरी जगह श्योर शॉट काइंड ऑफ ट्रेड है, तो ऐसे इतने वोलेटाइल स्टॉक्स में ट्रेड लेना ही क्यों है। अब इसमें से एक स्टॉक है डिश टीवी, जो आई विल रिकमेंड टू बाई। ओके, अब इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है, सो बी कॉशियस। ओके, and if you are a safe trader, I will say instead of buying in futures, go and look to buy in cash. Okay, that will be better. That's something which you can hold also. Okay, futures में मत खरीदो, कैश में खरीदो, बिकॉज वेरी बिग लॉट्स है ये, 70,000 या 80,000, पता नहीं कितने, काफी इसका लॉट से बहुत ही बड़ा है। सो बी कॉशियस ऑन दैट। आई एम एक्सपेक्टिंग डिश टीवी टू give you 24 to 25 upper circuit for the coming week. Okay, that is the expectation. But since the lot size is big, I'll just say that be cautious on it. Okay, very good trade, can give you a lot of money. आराम से 1.5-2-3 लाख मिल सकता है ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करो तो। बट if you don't have that much risk taking appetite, ठीक है, क्योंकि देखो ये 17.9 पे है, अगर मैं स्टॉप लॉस इसका देखूं तो इट विल बी समवेयर अराउंड दिस लेवल, 15.75। सो ऑलमोस्ट 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस होने का मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख का, 1.5 लाख के आसपास आपका स्टॉप लॉस है बेस्ड ऑन इट्स लॉट साइज। सो बेटर टू बाय इन कैश। ओके, और if it comes near this level of 16.5, then you buy, okay, for a target of 24 to 25. Okay, so that's the trade. So medium STV is the only place where I suggest to buy. इसमें हाफ क्वांटिटी कल जैसे मॉर्निंग में बहुत डाउन दिखा को दे सकते हैं, कर सकते हैं। अभिषेक आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मॉर्निंग में अगर दिखा को थोड़ा डाउन दिख रहा है उसके लिए, तब पूरी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। I can't hear you, Abhishek, properly. Just type in. हेलो, Yeah, Abhishek. मैं बोल रहा हूँ असल में जैसे कल डिस्प्ले अगर थोड़ा डाउन दिखा तो वो हाफ क्वांटिटी परचेज करिए, और फिर अगर थोड़ा नीचे आ रहा है जैसे डिमांड जोन के पास रिवर्सल दिया तो वहाँ हाफ क्वांटिटी आप करना चाहिए। Yes, you can add half quantity tomorrow. Okay, you can do that because this is small cap. So अगर market gap down होता है तो वैसे भी वो भी नीचे ही खुलेगा. Okay, and you can get it at a good price and buy it there. But just be cautious because ये देखो ये काफी manipulated stocks होते हैं, this TV and all ना. Technically looking very good, you never know, कल के कल ही वो वापस नीचे आ गए 10 रुपए भी चला जाए, I will not be surprised. ठीक है, कि हर दिन कल से वो पता चले कि इंस्टेड ऑफ अपर सर्किट लोअर पे लोअर लग रहा है, तो जस्ट बी कॉशियस। ओके, इफ यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक लाइक दिस टीवी, ओके, सी योर रिस्क एंड ट्रेड। ओके, दैट वुड बी द थिंग, बिकॉज वो दिन पर दिन वो लोअर सर्किट भी मार सकता है। टेक्निकली लुकिंग एट इट, looks a very good buy. I'm expecting कम से कम 2 से 3 upper circuit on this TV in the coming week. Okay, but again it is this TV. Okay, I'll be buying for sure.
लेकिन मैं भी अब जैसे नॉर्मली 10 लॉट लेता हूँ डिश टीवी में, 10 लॉट थोड़ी ना लूंगा, मैक्स 1 से 2 लॉट, दैट्स इट, 2 लॉट लूंगा, दैट्स इट, 1 लॉट पहले अगर गिरा तो 1 लॉट और, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो रियलिटी सेक्टर में आते हैं। सो रियलिटी सेक्टर के बारे में क्या डिस्कस किया था, एनीवन? व्हाट वाज द डिस्कशन ऑन रियलिटी, क्या करना है? It is looking good, but be cautious. Yeah. And the stocks are beaten down, but they have in the recent past given 20 to 40% returns. So unless until you get 5 to 10% correction, by and large, do not get in. Yeah, so see, try to buy them near their support zones. Okay. तो लास्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में थोड़ा रियलिटी स्टॉक्स वर बीटन डाउन, ठीक है। नाउ LNT, like for example, it's a good large cap. This is something which can be bought very near to its trend line also. So look to buy LNT. LNT is something can be bought around 1645, 1650 levels. Okay, this can be bought around that. Godrej CP still will try and wait. Let it just, Godrej Power, sorry. Let it just close over 1615, 1616 levels, and then we'll look to buy, not yet. Same with Phoenix. Phoenix में लास्ट वीक से ही लगा रखा है, अभी जब तक ये ट्रिगर नहीं होगा 916 का लेवल, तब तक फिनिक्स भी अभी बाई नहीं करना है, ठीक है। शोभा ऑल्सो लुक्स गुड, बट ये अब कैश में है, सो ये कब का ही कॉल दिया वो, अगर कैश सेक्टर में आपने खरीद के रखा हुआ है तो कीप होल्डिंग है। ओके, न्यू एंट्री के लिए वेट फॉर 690, 700, ओके, विच यू माइट नॉट गेट एक्चुअली, ओके, मोस्टली यू विल नॉट गेट, okay, but if you get it near 690 to 700 levels, again you can buy it in cash. Prestige State गजब ही रिटर्न दिया इसने, तो इसमें भी काफी पैसे बने अगेन cause of this massive selling. Okay, though volume is looking very good, but lot of people have sold on the highs. Okay, that's why be a bit cautious. Plus देखो ये इसका supply zone भी है, and that has worked. It went up but again closed here. So अगर कल को ये वापस नीचे आने लगता है, then it may again go back and fall to somewhere near 270 levels, half हो जाएगा सीधा, 50% risk है इसमें. So unless and until it starts closing above the supply zone, that is 440 levels, don't look to buy it again or enter now. Those who have bought, keep trailing. Same with DLF. DLF में ट्रिगर लगा कर रखा है, ठीक है। ऑलरेडी हमने काफी इसमें पैसे बनाए, 300 पे खरीदा था, 345 के आसपास बुक किया। अब अगेन DLF फिर तभी खरीदेंगे जब वो 350, 352 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है, ठीक है। इंडिया बुल्स अच्छा है, कैन बी बॉट, बट मुझे स्टॉक पसंद नहीं है, आई विल नॉट बाई। ओके, टेक्निकली लुक्स गुड, कैन बी बॉट, 130 का स्टॉप लॉस डाल के, those who want, those who are comfortable trading in it, okay, can buy it. I will not buy it because I'm not very, don't like this stock that much. Yeah, but technically it looks good. 130 का ऐसा रख के people can buy it. Brigade looks very good. Okay. So why? So what are the reasons you don't like this stock? नहीं, ये बहुत manipulated stock है यार, IBM and also I don't buy it. ठीक है, मतलब इतने सारे stocks हैं, so see, अभी आज ही हमने डिस्कस किए कम से कम 15-20 स्टॉक्स एटलीस्ट हैं जो बाई कर सकते हैं, राइट। अब वो 15-20 पूरे 20 स्टॉक्स तो बाई करने के पैसे सबके पास नहीं होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। मुश्किल से 1, 2, 3 आप खरीदोगे, 4, 5, तो वाई गो एंड इन्वेस्ट इन सच ए स्टॉक, okay, which is manipulated, which is more risky. Instead, find out of those 23 trades which are giving you the best risk reward and trade on that. Now my job here is to tell you everything, but then your job is to go and select one of it, okay, and that you can do only based on your risk appetite. So for me, like, my advice will be for everyone to only buy from auto and FMCG, ignore fucking everything else.
Okay, but that's my job to discuss all of it, and so I'm discussing. So brigade people who are long keep being long, still looking good. Hemisphere, leave it as of now. Oberoi also, those who are long and keep holding it. Okay, no new entries as of now. Suntek में ट्रिगर लगा हुआ है ऑलरेडी. 400 के जब तक ऊपर नहीं जाता, will not initiate new trade. ठीक है. सो FMCG, ऑटो, मीडिया, रियलिटी हो गए. अब आते हैं थोड़े खतरनाक सेक्टर्स पे. आईटी, मेटल, बैंक्स और फाइनेंशियल्स. सबसे पहले हम कर लेते हैं आईटी. तो साइडवेज मूवमेंट है टेक महिंद्रा में. ओके, इंडेक्स इज लुकिंग वीक. Index can fall down a bit. So if Tech Mahindra goes below 1374.75, what is now 1395 के आसपास, उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, it will be a sell. As of now, neither we are going to buy, neither we are going to sell. New buy will come only above 1480 levels. 1480 के ऊपर जाता है तो बाई करेंगे, 1390-95 के नीचे आता है तो सेल करेंगे. इन दोनों के बीच में कुछ नहीं करना है, साइडवेज है. लेट्स लीव इट एज ऑफ नाउ. सेम माइंड ट्री में भी वही सेम सीन बन रहा है. ठीक है. देखो, सारे आईटी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा. सब में कुछ नहीं करना होगा, नई एंट्रीज नहीं. जिन लोगों ने खरीद कर रखा है, कीप ट्रेलिंग. नो न्यू एंट्री. सेम एलटीआई में भी कोई नई एंट्री नहीं. सेम विद एचसीएलटेक. इनफीज वन, विच जिसमें बाई कॉल ऑलरेडी मैंने दे रखा है. दिस यू कैन कीप होल्डिंग. 1660 का एसएल दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी. इसमें बाई कॉल है. ठीक है. सो कीप होल्डिंग दिस 1660 के स्टॉप लॉस के साथ. उसके नीचे जाता है विल एग्जिट. सेम विथ विप्रो, कुछ नहीं करना है, लीव इट. सिर्फ ट्रेल. टीसीएस कीप ट्रेलिंग. ओरेकल में ट्रिगर लगा देते हैं बिकॉज दिस इज शोइंग कंसोलिडेशन एंड कैन गिव अ ब्रेकआउट. ओके, सो ओरेकल में ट्रिगर लगा देते हैं, बट एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं है. 1480 के ऊपर ही वी विल सी. Coforge, this one is something which can drop this week. There can be a massive drop in Coforge, so just avoid it. Okay. Emphasis में भी सेम वही कुछ. तो आईटी स्टॉक्स में देखो, किसी में भी बाई नहीं है. तुरंत जाके किसी में कुछ नहीं खरीदना है. सब में जिन 2-3 लोग चीजों में बाई है, वो भी कब है, ट्रिगर के बेसिस पे. अगर ट्रिगर होता है मिड वीक, आई गिव यू गाइस द बाई कॉल. यू कैन आल्सो कीप द ट्रिगर सो दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी. ठीक है. रेस्ट, if you are already holding, keep trailing. No new entries in IT stocks as of now. Only one stock is there, Infi, which we are long. Okay, 1660 का उसमें stop loss है. अगर वो हिट होता है तो एग्जिट कर जाना. That's it. ठीक है. So IT में no new entries as of now. Metals, almost. अब देखो, वेदांता अगेन वेरी बेरिश स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ. ठीक है. 260 के जब तक ऊपर है तब तक शॉर्ट नहीं करना है. ओके, लेकिन बाई भी अभी नहीं करना है. सो अभी छोड़ दो इसको. रतन मनी अगेन, जिसमें ट्रिगर लगा हुआ है, जब तक ट्रिगर है होता नहीं है तब तक बाई नहीं करना है इसको भी. तो ये भी छोड़ दो. अडानी में भी सिमिलर. ये लाइन के ऊपर जब तक क्लोजिंग आता नहीं, 1575-80 के ऊपर, तब तक ये भी नहीं कुछ करना है. इसमें भी छोड़ दो. नथिंग टू डू इन कोल इंडिया. नेशनल एल्यूमिनियम में ऑलरेडी बाई का कॉल दिया हुआ है बिकॉज दिस वाज गुड. नाउ लुकिंग एट द मेटल्स. ओके, दिस माइट बी समथिंग like a flat formation. Okay, and it can fall also massively. So that's why I said keep trailing. इसका भी लॉट साइज बड़ा है. 17,500 17,000 का लॉट साइज है. ठीक है. So already ये प्रॉफिट में चल रहा है. Keep trailing it. Okay, don't make loss on it because you will not get an opportunity to exit. It will fall. If it falls, it will fall massively. Okay, 70 तक आ सकता है, 60, 69, 70 तक. So trail it very tightly. ठीक है.
मोइल में अगेन बाई कॉल था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं, राइट नाउ नथिंग टू डू। सेल सेम कहानी जैसे लास्ट वीक की थी, जस्ट ओनली वन थिंग इज गुड, इट्स नियर इट्स डिमांड जोन। वी वेंट लॉन्ग अराउंड 115 122 तक के ऊपर गया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एग्जिट किया। ठीक है, नई एंट्री लेनी है फिर ले सकते हो नई एंट्री, बट ट्राई टू बाई नियर 115 116 ओनली, नॉट एट 120 22। ओके, जब तक ये 115 116 के ऊपर है तब तक योर टारगेट ऑफ 140 145 remains intact, and that's why I said instead of falling in this trap of buying futures, these are the type of stocks which you should buy in cash, headache कम रहेगा। ठीक है, so that will be again be the advice, if you want to hold sale, buy in cash market। फ्यूचर्स में खरीदोगे 9,000 का लॉट साइज है, लगी रहेगी हमेशा। हाँ, Hind Zinc looks good. Okay, this is something which can be bought. This is demand zone, supply zone, जो कह लो अभी। ठीक है, if you get it somewhere around 320 levels, definitely buy it। Okay, your stop loss will be somewhere around 300 मान के, ये क्या है, हाँ 300 का stop loss डाल के you can buy it। Okay, 300 का stop loss डाल के अगर 320 के आसपास मिलता है you can buy Hind Zinc। NMDC leave it very bearish as of now, but don't sell it also। Jindal Steel consolidating, clear cut consolidation है, let it break over 430 435 level, that's where we'll look to buy। उसके बाद एक बड़ा अप मूव देखने मिलेगा, but as of now nothing to do। JSW similar to sale। Okay, the only good thing is your stop loss is small, so if you buy you can buy it with a very small stop loss, but as of now I'd say instead of putting money in risky trades like this, buy FMCG, buy auto, leave it as of now। same with Tata Steel, ट्रिगर लगा रखा है 1481 1490 के ऊपर, जब जाएगा तब विल लुक टू बाय, एज ऑफ नाउ इग्नोर करना है इसको भी। सेम कहानी हिंडाल्को में भी है, 470 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा देन विल लुक टू बाय, एज ऑफ नाउ अगेन दिस इज आल्सो अवॉइड। APL अपोलो बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, सस्टेन भी किया है, तो दिस इज वन थिंग व्हिच कैन बी बॉट। ओके, कई दिनों से मैं इसको इग्नोर कर रहा था, बट ये ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, so this is some place where you can go ahead and buy by keeping a stop loss of 1766। अब ये भी बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, स्टॉप लॉस भी इसमें आपका बड़ा है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, so try to buy if it falls and comes closer to the stop loss instead of just buying right now। वेल्सपन्स में लास्ट वीक से ही बाई कॉल है, अभी भी चल ही रहा है, बट नाउ लुक टू बुक इट इफ इट गोज समवेयर अराउंड 130 के आसपास, इसको बुक कर लेना जिन लोगों ने खरीदा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी मेटल और आईटी। ठीक है, देखो अच्छे ट्रेड्स तो आपके ऑटो में ही हैं और एफएमसीजी में ही है, जिसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, बाकी हर जगह ट्रेड्स थोड़े क्राउडेड है। जो अच्छे ट्रेड्स हैं बाकी जगह वो ऑलरेडी दे ही चुका हूँ, नेशनल एल्यूमिनियम जैसे है इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है, ऑलरेडी जो ट्रेड हैज बीन गिवन। ठीक है, ऑलमोस्ट 18,000 का प्रॉफिट इसमें चल रहा है, 17,000 का। तो दिस इज समथिंग विच लुक टू ट्रेड टू योर कॉस्ट एंड डोंट मेक लॉस इन दैट, बिकॉज इफ इट फॉल्स इट विल गो टू 70। बचा क्या, बैंक्स और फाइनेंशियल्स, कुछ नहीं करने को होगा बैंक्स में। फेडरल बैंक, बैंक्स में यार भाई कहीं पर भी किसी में भी ना, अभी कल के लिए एंट्री नहीं है। फेड बैंक में ले सकते हो एक एंट्री 80 का स्टॉप लॉस डाल के,
उसके अलावा एयू में कुछ नहीं है। आरबीएल में ऑलरेडी जो लॉन्ग थे इसमें तो हमारा ट्रेल ऐसे लेट हो चुका है ऑलरेडी, इसमें भी हम एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट में निकल के हैं। कोटेक ने एक तरीके से ब्रेकआउट दिया, बट इफ यू सी दिस इज कोटेक का सप्लाई जोन, वेरी मच पॉसिबल नेक्स्ट वीक ये गिरे और तगड़ा गिरे। ठीक है, सो कोटक भी अभी छोड़ दो। एचडीएफसी में क्लियरली बोला है, 2 वीक से ही बोल रहा हूँ, जब तक नया हाई नहीं आएगा एचडीएफसी में कुछ नहीं करना है। करेक्टिव स्ट्रक्चर है इसमें भी, मोस्टली ये भी ऊपर जाके गिरने वाला ही है। आईडीएफसी, सारे छोटे बैंक लास्ट टाइम ही बोला था, वही सिर्फ अच्छा कर रहे हैं। देखो सबने, सिर्फ छोटे बैंक्स नहीं अच्छा किया इस वीक, और आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड एसबीआई है। पीएनबी also can be bought, okay, with a stop loss of 36. आईडीएफसी छोड़ दो, पीएनबी कैन बी बॉट विद a stop loss of 36। बंधन में बाई कॉल थी, बंधन अभी कैरी करते रहो, बंधन स्टिल कीप होल्डिंग। दोज हु हैव नॉट बॉट, if they can keep a stop loss of 260, buy बंधन। ओके, जैसे कल को अगर मार्केट गिरता है, you get it somewhere around 260-65, buy it। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग है हम अभी ऑलरेडी। ठीक है, कीप होल्डिंग योर लॉन्ग्स, नथिंग इज चेंज इन द सेंस में, कुछ नहीं करना है। एक्सेस एंड ऑल, मैंने मिड वीक की कॉल दिया था, हाईस पे मत फंसना, निकल जाओ बैंक से, इसमें से निकल जाना है। ठीक है, तो बैंक्स में भी हमारा गाइस कोई लॉन्ग तो नहीं है ना, एनीवन हु इज लॉन्ग ऑन एनी बैंक एज ऑफ नाउ? बंधन पे हो? बंधन पे हो ना? हाँ, तो बंधन अगर देखो, ट्रेल करते रहो यार हर चीज को अपने कॉस्ट पे। बंधन अगर गिरता है तो वही जो लेवल्स बताएं वहां पे वापस यू कैन ऐड इट, वही स्टॉप लॉस है पहले से। ठीक है, एनीवन एल्स हु इज लॉन्ग ऑन एनी बैंक, ऑलरेडी वैसे बंधन प्रॉफिट में ही होगा। प्रॉफिट बुक कर लिया है। हाँ, वही प्रॉफिट बुक करने का ही बोला था मैंने मिड वीक, अगर आई होप कि कर लिया हो, क्योंकि लाइक आई सेड, डोंट गेट ट्रैप्ड ऑन द हायर साइड ऑफ बैंक्स एज ऑफ नाउ। मिड वीक ही इसीलिए मैंने भेजा था वो, ताकि आप लोग वेबिनार तक वेट ना करो प्रॉफिट्स बुक करने का। तो बैंक्स में यार अभी कोई नया एंट्री देने लायक है नहीं, अपार्ट फ्रॉम फेड बैंक विच कैन बी बॉट, और एक तुम्हारा बंधन, जो अगर गिरे तो खरीदना। ठीक है, बाकी सब में निकलना है। आईडीएफसी भी यू कैन बाई, और पीएनबी यू कैन बाई। सो पीएनबी, आईडीएफसी और फेड बैंक आर द ओनली 3 banks which you can still go ahead and buy, but there are much better trades again। ठीक है, so I will suggest go ahead and only choose any of these stocks, especially ITC पे ध्यान देना। ठीक है, और choose any of these क्या auto stocks, that will be some place where you will make good money। चलो फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कई बार बोल चुका हूँ, 1250 पे आए खरीदो, 1350 पे बेचो, बेचने का टाइम आ गया है इसको। ठीक है, बुक कर लिया है तो ऑलरेडी 100 पॉइंट के प्रॉफिट में हो, नहीं बुक किया है तो नो इश्यूज, बुक कर लेना कल। ठीक है, पीएफसी वाज ए कॉल, ऑलरेडी वी मेड मनी। ठीक है, दिस वाज ऑलरेडी अ बाई कॉल गिवन, ऑलरेडी मेड मनी, टाइम टू एग्जिट इट। ओके, इफ यू हैव नॉट एग्जिटेड इट, एग्जिट टुमारो। ओके, 140 से ऊपर जहां तक मुझे लग रहा है अभी नहीं जाएगा, नेक्स्ट कॉल विल गिव ओनली अबव 140। ओके, एम फाइनेंस अगेन नियर दिस, जस्ट इग्नोर एज ऑफ नाउ। एचडीएफसी वाज अ बाई कॉल अगेन, ये सारे मैं बुक करा चुका हूँ वो ऑलरेडी इसमें अभी। बुक कराने का रीजन ही मिड वीक यही था कि ये सब अभी वीक दिख रहे हैं, सब अपने सप्लाई जोन पे। एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गया, आरईसी, एचडीएफसी लाइफ, all are near their highs and they are looking weak। Okay, so as of now no calls in financials। देखो एसबीआई और लाइफ ऑलरेडी गिर भी गया। ठीक है, सो गाइस देखो फाइनेंशियल्स में देयर आर नो कॉल्स टू गिव एज ऑफ नाउ, and the only place to focus this week will be to buying on autos। the rest sectors, now you many of you must be thinking कि buy नहीं है तो sell कर दे, नहीं, sell नहीं करना है, क्योंकि overall index is bullish। So
बुलिश इंडेक्स में सेलिंग नहीं करते हैं, ओनली विल लुक टू बाय, सो गिरने दो फिर उनको खरीदेंगे। और इस वीक ओनली फोकस योरसेल्फ ऑन एफएमसीजी एंड ऑटोज एज ऑफ नाउ। बाकी देख लेते हैं थोड़े बचे कुचे स्टॉक्स जो हैं। आरती So नथिंग टू डू। cement stocks we can check. हाँ देखते हैं यार, FMC. लाइन से देखेंगे। तो ये देखो एसीसी में ऑलरेडी हम लॉन्ग थे, कीप होल्डिंग इट, इट विल स्टिल गो हायर। एल्केम लो लैब भी अच्छा दिख रहा है, 3700 का स्टॉप लॉस डाल के खरीदा जा सकता है। ओके सो स्टॉप लॉस 3700 होगा, बाकी देख लेना। अंबुजा हम लॉन्ग थे, देखो क्या, ये भी रखे रहो। अपोलो टायर नथिंग टू डू एज ऑफ नाउ। एशियन पेंट, ये सारे देखो पेंट और सीमेंट सब में हम लॉन्ग है लास्ट वीक से ही, कीप होल्डिंग मैन। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा नथिंग टू डू, नथिंग। ये भी बीएल एंड ऑल, इसमें भी हम ऑलरेडी लॉन्ग हैं, कीप होल्डिंग देम। ठीक है, yes, this looks good, चलो। गाइस बर्जर पेंट पे ध्यान दो, इस वीक बढ़िया मूव दे सकता है। सारे पेंट स्टॉक्स सीमेंट स्टॉक्स भाग चुके हैं, बारी है बर्जर पेंट की। ओके, बर्जर पेंट लुक टू बाय यार, दिस इज वन थिंग यू विच यू कैन बाय कीपिंग 786 790 का स्टॉप लॉस। ओके दिस शुड बी बॉट। सो बर्जर पेंट में अगर थोड़ी भी वीकनेस दिखे आपको, ये 825 820 के लेवल्स के आसपास दिखे, लुक टू बाई, हेज कर लो, दिस विल गिव यू गुड मनी। भारतीय एयरटेल भी लास्ट वीक बाई था, कीप होल्डिंग, नो चेंज इन दिस, जस्ट कीप होल्डिंग। भारतीय एयरटेल में तो क्या पैसे बने भाई, अच्छा गुड बाई इट वाज लास्ट वीक आल्सो अगेन। किसने किसने खरीदा था भारतीय एयरटेल, किसी ने खरीदा भी या नहीं? और अभी भी ये ऊपर जाएगा, दिस इज समथिंग अगेन विच विल स्टिल गो अप। 700 740 तो मिनिमम आने वाला है इसको। देखते हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है अक्टूबर नवंबर के दोनों फ्यूचर्स खरीद रखे हैं मैंने, अक्टूबर भी नवंबर भी। लेट्स सी। बॉस बीपीसीएल देख सकते हैं। देखो गाइस बीपीसीएल ऑन लास्ट वीक बोला था हाइस के पास है। ठीक है, टाइम टू बुक प्रॉफिट, ऑलरेडी लुकिंग वीक नाउ। अब इनमें जब तक बीपीसीएल एंड ऑल 500 के ऊपर नहीं जाता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक न्यू बाइज नहीं आएंगे इसमें। बिरला कैन बैंक नथिंग, सोलर सप्ला, कोल इंडिया, कोफोर्ज, कोलगेट, कॉन्कर। कॉन्कर में भी लास्ट वीक से ही बाई था, कीप होल्डिंग। ओके, कीप होल्डिंग द बाई इन दिस। सिटी यूनियन बैंक छोड़ दो, कमेंट्स छोड़ दो। दीपक, स्कॉट्स भी देखो गए लास्ट वीक बाई था। अब वही है लास्ट वीक जिसने खरीदा है, दे कीप होल्डिंग, इसमें भी नो न्यू एंट्री। गेन नथिंग, लैंडमार्क वेरी बेरिश, ग्रासिम, ग्रासिम लुक्स गुड, ग्रासिम लुक्स गुड गाइस, ग्रासिम लुक्स गुड। तो ये 1600 के ऊपर जाता है अगर कल, लुक टू बाई अबव 1600। हैवेल्स में ऑलरेडी बाई कॉल है, कंटिन्यूड, नो चेंज इन दैट।
Leave it as of now. Hmm. Look to buy Indigo, guys. Indigo looks good to be bought. Okay, so Indigo का stop loss आपका होगा 1850. Again, this is something buy. Okay, it will again give you good money. 2200 का टारगेट रहेगा इसमें. स्टॉक अच्छा है बच्चों का. कौन है? नौकरी बीच में मिड वीक ही कॉल दिया था बाई करने को. तो ये भी अभी की ट्रेलिंग, इसमें भी बहुत ऊपर के लेवल्स हैं. Ramco is still a buy. यार रिलायंस तो ऑलरेडी निकल चुके हैं. अब अभी फिलहाल रिलायंस इज नॉट लुकिंग लाइक दिस इज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर. ये जो ब्रेकआउट था ना, दिस इज नॉट अ वेरी कन्विंसिंग ब्रेकआउट. दैट वाज द रीजन फॉर एग्जिटिंग. ठीक है, रिलायंस इज स्टिल not giving me confidence to go long. Let it do whatever it is doing, but mostly it should come down. वॉल्यूम भी नहीं है. एक अब मूव स्टार्ट होने वाला होता है, वो जो ब्रेकआउट पे वॉल्यूम होता है ना, दैट इज टोटली मिसिंग. अब ये देख लो, ये होता है वॉल्यूम. दिस इज द वॉल्यूम व्हेन अ मूव हैज टू डू. ये वॉल्यूम इज इवन लोअर देन दीस थिंग्स. सो जस्ट अ बम्प अप, डोंट गेट ट्रैप्ड ऑन द हाइज. Cement stocks are still a buy. Continue holding them. Guys, Titan is also looking good to be bought. ठीक है, टाइटन में 2013 का स्टॉप लॉस डाल के ये भी कल खरीदा जा सकता है. कंज्यूमर स्टॉक ही है, एफएमसीजी है. करंट ट्रेंड ट्रेंड भी अच्छा है. बट ये अल्ट्राटेक, यूपीएल, वोल्टास. Voltas is already we are holding, keep holding. Then guys, nothing more to do. I think we have discussed all. So clear cut summary, anyone can do the summary for today. What is the takeaway from today's whole webinar? चलो अभिषेक बताओ, क्या समरी है आज का? तो आप लोग नहीं बोलोगे तो मुझे ही पूछना पड़ेगा. अभिषेक टेल मी. हेलो. हाँ सर, आवाज आ रहा है? हेलो.
Yes, Abhishek, tell me. बाकी ऑटो एफएमसीजी के जो स्टॉक्स थे वो डिस्कस कीजिए ऑटो सेक्टर का मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है वन कीजिए और एफएमसीजी सेक्टर Okay, I could only listen half of it. Maybe थोड़ा voice issue है. Anyway, Sagar, tell me, what do you summarize today? Sagar, can you hear me? ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अपना समरी बनाओ और ट्रेड करो, और क्या. I can only ask. चलो guys, then done for the day. जितना मेहनत करोगे उतने पैसे बनेंगे, नहीं करोगे नहीं बनेंगे. As simple as that. So done for the day, and enjoy your rest of the weekend. Trade with caution. This week might be a little bit down, and try to choose trades in strong sectors instead of choosing trades in weak sectors, just thinking they will give you more money. So always just remember one thing: more money means also means a bigger risk. So unless you are ready to take that amount of risk, don't even look at such stocks. Okay, so try to minimize your risk and take the stocks which are in stronger sectors. Okay, and try to buy as close as possible to the stop losses as mentioned. Okay, Baki, learn to hedge it by selling out of money options so that you can hold, and focus will be on FMCG and auto. Wrapping it up. Thank you guys. Bye bye. Take care of yourself. Bye. Thank you, sir. Absolutely.